37, Deepraj Gaonkar, the captain of Desert and Mo Avengers, along with the BCCI match referee Rohit Snodkar. Deepraj is spinning the coin and Ishan is going to call. Heads, he says. Heads it is, Ishan. The coin has rolled in your favor. And what's your decision? We are going to bowl first because this is a very crucial game. So we will bowl first and What do you think, Ishan, is the ones that you're going to restrict and comfortable to chase? we are looking to restrict them under 150. So it will be good for us to. Any changes in the playing 11? Yeah, playing 11. Sumi is not playing. Instead of that, one medium pace is playing. Yuvraj Singh. Have a good one. Deepraj batting first. Big, loud smile and laugh of the toss. What is the secret? Nothing. We also was looking to bowl first. This is a crucial match for both the team, and yeah. Deepraj, high scoring matches and a good pitch. As a captain, what do you think batting first? What will be a comfortable total to defend? Anything above 180 will be comfortable for our bowlers to defend. How is there any changes in the playing 11? Yeah, one change. Rishikesh is not playing. In place of Rishikesh, Aditya Dalal is playing. Have a good one. News coming right from the center of the ground. Sarkar 37, Ishan won the toss and he says, ball first.
Very good afternoon and a warm welcome. The news coming right from the center of the ground is Sarkar 37 won the toss. And Ishan says they're going to have a ball first. The team is spreading on the field to take their positions as the batters of Desert Mo Avengers under the captainship of Deep Rajgaonkar are here to play. So I'd like to wish both the teams all the very best. May the best team play, and it's a good sportsman spirit shown by Deep Rajgaonkar. As always, he's a great human being, wonderful captain. And once again, all the best for both the teams. Sunny day, lush green grass, excitement there. Two official umpires on the ground is Prashant Kadekar from Aldona and Punya Palkar from Savavere. Myself, Nadeem Ahmed, and along with me is outstanding commentator Bantu Delkar and Harish Kakodkar. GOICHI League 2025 Season 2 organized by SANGUEM cricketers and powered by Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Desai, and others. The title sponsored by none other than BCCI Joint Secretary Rohan Gauns Desai. And big thank you to all the sponsors for this tournament. Let's get started as all are in the readiness. What a part of wicket to bat, as we saw just in the morning. 192 was easily been chased by Priority Titans, and good batting from Prathamesh Salagi once again giving the start to the team, and followed by Vikas Singh, who went on to score 70 runs of just 31 deliveries with 5 huge sixes and 6 boundaries to his account, winning him the player of the match in the hands of Kuros Cruz, the former chairman of Sangay Municipality. On the bowling mark is Yuvraj Singh, Arsalan on strike. Oh, lovely line to ball to appeal, caught behind. Yes, just the finger goes up towards the heavens. Arsalan Khan is surprised. He's in shock. And the very first ball, maybe some noise, but Arsalan Khan is absolutely not sure. Oh yes, the ball was very close to the bat. Could have been a fine edge, says the umpire Punya Palkar. What a dismissal and what a way to bowl. Absolutely right from the beginning. The very first ball is a wicket of Arsalan Khan, who was the man of the match in the previous match. He's the batter. Once he gets going, absolutely, he gets unstoppable. And definitely, Sarkar 37's got the prize wicket to the very first delivery of Yuvraj Singh. Wonderful line and length. Yes, look at the excitement. They know what they have. They have the prize wicket of Arsalan Khan, one of the finest of the batters of Desert Mo Avengers. Look at Yuvraj Singh is bubbling with confidence. In the box I have with me Bantu Delkar and Harish Kakodkar, and I just would like to introduce you to Rohit Asnodkar, the BCCI match referee, who's definitely taking care of the matches in a fantastic manner. Good conduct from him, time to time. Wonderful match referee. Sangem Cricketers organizes GOICHI League Season 2. On strike is Ayush Velikar. A good drive with the full face of the bat. But they will carry this confidence in the overs to come. The ball, especially Yuvraj Singh. What a breakthrough. Absolutely a dream wicket. Very first ball, a wicket of Arsalan Khan. The batter's got a job to do here. A partnership will be very handy. Can Ayush provide that alongside Avishkar? Wonderful, nice, good work. Absolutely, the ball beautifully worked with the wrist.
And that will go past the bowler batter. That will go past the fielder. Good work from Ayush. Look at the flick of the wrist. Beautifully done. Absolutely wonderful timing towards the long leg region. In spite of good efforts from the fielder, unable to reach that ball, racing away. At the same time, they have to make the good use of the power play as well. 3 overs mandatory power play. As a 6 of the power play is split into a 3, 2, and 1. That is two over of the batting power play can be taken later on, and then followed by a golden over. And we have with us in the com box the president of Sangem Cricketers, Advocate Tushar Karmalkar, along with General Secretary Amrish Marathe, who's looking quite handsome today with that yellow shirt. And Narayan Masurkar, the treasurer and a very rich man of Sangem, because he's a treasurer of Sangem Cricketers, GOICHI League. Yuvraj Singh. Avishkar against the strike. Watchful. Ken Avishkar Mone plays a long insensible inning. Well, he is capable of. Once he stays there, he will definitely play a long inning. He is such a great batter. Calm, cool, collective, plays to the merit of the ball. Always reads the line length, gets in a good position. Good footwork, good stance, stylish batter. Avishkar. Lovely shot, nice and straight down the ground. That has gone all the way, bang, down the banner. What a shot that was, picked it up beautifully. Not really half volley. It was a bit of good length delivery, and still, look at that quality of Avishkar Moni. Bang. That will boost his confidence. And this is the beauty of the batters of Desert Remo Avengers. In spite of the fact that they've lost early wicket, the very first, but still, see the confidence in both the batters. They're not under pressure at all. And especially Avishkar Mone. He's having a wonderful season at Sai Baba Sports Club, organizes T20 at Amona. He was the man of the series. And every match he went out there, he put up a good show. And in the very first match, he was the player of the match awarded. Such was his performance in that particular tournament. And he's such a wonderful batter. Avishkar. And the 1 over score is 11 for 1. A lot of 1 in those figures. On the bowling mark is Rutvik Naik, son of Virendra Naik, brother of Yogesh Naik. Lovely line. Just wanted to guide the ball, but finds the fielder. Ayush Verdekar. In the morning match, it was played between Chogli Global under the captainship of Darshan Misal. They could not defend 192 and was chased by Priority Titans within 15 overs. Credit to Prathamesh Salunke, who is outstanding, another 50 back-to-back.
and followed by Vikas Singh contributing 70 runs of 31 deliveries. Lovely. But watchfully played, just a nudge to pick up a single. Ayush moving on to 6 of his individual score of just 3 deliveries that he faced. And Avishkar Mone is also on 6 of just 2 deliveries. What a wonderful shot that was, absolutely purely timed right out from the middle of it. Good swing, no half measures, no hesitant, straight away. Bang. This is the quality which I like about him. He's absolutely one fearless batter that I've seen. He can rise up to any occasion, at any situation. Lofted shot once again. The ball has got enough of it, and yes, it is. It will sail over the head of the fielder. Maybe a couple of bounces to the boundary. Yes, it is. Comes the signal. It's a 4 runs. Didn't really quite picked up from the middle. Oh, he's just having a pain. He's down with. He looks to be in excruciating pain. What's the reason? Has a collision with his partner. Really not sure, but he's in pain for sure. Yes, on your screen, Kyrgios Cruz was the special guest for the morning match. Former chairperson of Sanguem municipality and current councillor, given his precious time for the post-match presentation. Wonderful guest at the end of every match is the beautiful tradition of this wonderful tournament. Sangue Cricket brings you Goichi League Season 2, powered by Shri Subhash Pal Desai, Honorable Minister for Social Welfare. He's looking good. He's back on his feet. Avishkar Mone, jersey number 14, alongside Ayush Vedlikar. Oh, lovely shot. He continues to play his natural. The ball is up. And no fielder there. One bounce to the fence. Back-to-back boundaries in spite of his injury. And that's the reason why I call him one of the bravest batter and the most fearless that I've seen in the T20 format of the game on the Goan soil. Avishkar Mone. Bang once again into the mid-wicket region. The ball going dancing down the track. And no fielder there. And taking the good advantage of these 3 mandatory power play, 1 to 3. Field restriction, which gives advantage to the batters. And this power play are designed for
a good start in the T20 format. Lovely shot down the ground, a diving effort from Rutvik on his own bowling, but the ball has gone past. I hope he's fine. Yes, maybe slightly impact. Good over. Beneficial for the batters to mark the end of 2 overs. 21 for no loss. For the loss of 1 wicket, correction. 21 for 1. Free hit has been taken, optional free hit. The very first ball of the third over. And we'll see whether Avishkar Mane once again swings his bat. Even if he gets out on this delivery, he'll be not given out because that's the beauty of the power play free hit. As the finger rotates above the head hat of Punya Palkar. Oh, lovely shot. Oh, look at that power, timing, and the placement. Brilliant. Smoked it. Avishkar Mane. Oh my goodness. Look at the power that is unleashing. Every muscle fired. Bang. Oh, Apish. A bouncer that was slightly away though. They tried his best and Rutvik Naik gets the bruises, I believe, when he is injured. After that fall attempt to stop the ball on his own bowling. With the drive from Avishkar Mane, the ball races it towards the long off. So could be another boundary here, and yes, the ball will win the race. There was a good chase from the fielder, but won't be able to stop that. Another good looking shot. He's just getting those runs. Look at, he's just here. Batting is natural, Avishkar Mane. What a way to time the ball, and time and again he's getting those boundaries now. Sixes and boundaries is the game. Definitely he looks like he's on a mission to complete. Avishkar. Especially to make the good use of the 3 overs of the power play, which is mandatory. And he's doing that in style. Oh, take that once again. Lack on the distance could be dangerous here for Avishkar. And he departs. The ball is excited. Yuvraj Singh picks up another wicket. 2 for him. One of Arsalan Khan and now of Avishkar Mane. Both a prize wicket. Yuvraj Singh. Singh is king. Big name in cricket, Yuvraj. And this Yuvraj is also making his presence feel on the ground.
We also have a DJ here, Narayan Masurkar, one of the finest DJ of Sange. Of course, one among the richest as well is that he is the treasurer of Sangem cricketers, Narayan Masurkar. Sachin, operator on for Goa livecast. Cameraman around Tejas, Arshil Khan, Yuvraj Singh. Watchful, nice and straight bat. Waiting is a good call. The ball has gone past the bowler. If the bowler had to pick up the ball cleanly, that would have been dangerous for the striking. Aditya Dalal walks in at number 4. After the departure of Avishkar Mohani, who was batting so good, sixes and boundaries that he was dealing with. But he has done his job, I believe, of 3 overs. Contributed around 31 runs. Jointly along with his partner, Ayush. Watchful, good work of hands. A bit risky here. Shy on the stumps, but he's well low. A square in the air. A square in the air. TV umpire to director. Well, he's in and he's safe. A good drive of the bat, which saved him. Just a matter of a fraction of seconds and a good work from the batter to have grounded his bat early and quickly. These are the basics for the batters to just
On the back foot, beautifully played in the covers. Quick response. Down the stumps once again. But this time misses the target. Mayank Rawat in the bowling marker into the fourth over. Oh, on the back foot, beautifully bowled. To sum up over number 4, 36, good control from Mayank Rawat. 36 for 2 after 4 overs. Oh, there's another wicket here. Another wicket on the back foot. Just wanted to play the ball, missed it completely, crashed onto the stumps. The third wicket down on a total of 36. With the last delivery of Mayank Rawat, and Mayank strikes, picks up the first wicket for him. What over this is? Just 4 runs considered and picked up a wicket. And a 4-36 for 3 wickets down now. Desert and Avengers batting first. They've been asked to after the toss won by SARKAR 37. Ishan Gadikar opted to have a ball first. Well bowled, Dheeraj Yadav on the bowling mark. Wonderful play, works for Railways. From the Put Town City. Watchful, very watchful, Ayush. Ayush knows that someone has to stay on the crease after the fall of the quick 3 wickets. Aditya Dalal could not survive there for a long, a quick one from Mayank Rawat right onto the stumps to depart him. First to go, Arsalan Khan, and then Avishkar Mone gave a good stand. Some good looking shots from his bat, 6 run boundaries, which flowed in the power play overs of 3, mandatory. And then comes Aditya Dalal. A quick one gets him out. And that brings the captain, Dipraj, alongside Ayush Verikar. One partnership will be very handy here for team Avengers. So wonderful shot all the way for the 6 runs. Dipraj Gaonkar. Yes, it is. The ball was right in the slot and beautifully picked up with the timing perfect. And look at the ball sailing a distance above the banner of the Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Desai. Good support from Ayush. A partnership is slightly growing and a much needed partnership. They need a few of those.
on the back foot. Oh, it's a little bit of a fumble there, but wasn't there from the bat. Just wanted to slice it on the back foot, Deepraj Gankar. He knows that he has to play a captain's inning. 49 for 3 here. Probably this will be the last delivery of the 5th over. Dheeraj has so far given 13 runs of 1 over. End of 5 overs, 49 for 3. It will be changed in the voice over to the dashing commentator in Hindi, Bunty Udelkar, on the microphone. धन्यवाद नदीम अहमद जो कि अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुना रहे थे। इस बीच अगेन बिल्कुल व्यवस्था की जा चुकी है, मॉनिटर कमेंटेटर के सामने, स्कोरर के सामने है, तो अब मज़ा आएगा कमेंट्री के लिए भी, स्कोरिंग के लिए भी। ये गेंद कड़ा प्रहार किया, उठा दिया, फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल क्लियर कर दी है बाउंड्री, और ये हवाई यात्रा पे गेंद निकल चुकी है 6 रन के लिए। आयुष और दीपराज ये जो 2 बल्लेबाज है और गेंदबाज जो कि मयंक। स्विच खेलने की कोशिश, गेंद तेजी के साथ बिल्कुल गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। बेहतरीन चौका जो कि स्विच खेलने की कोशिश, और स्कोर 59 रन, 59 for 3 in 5.3 overs। मयंक रावत जो कि पेप्सी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच गेंद पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। जब तक फील्डर पहुंच पाते तब तक 1 रन बनाने का मौका था, और इस 1 रन के जरिए स्कोर 60 रन पर जा पहुंचा है, 60 for 3। हालांकि 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन रन भी बटोर रहे हैं दीपराज गांवकर और आयुष वेलेकर। इसी बीच ये गेंद कलाई के जरिए मोड़ दिया, जो कि कप्तान खुद दीपराज गांवकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आयुष वेलेकर बढ़िया साथ निभाते हुए 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। रन औसत जो है काफी बढ़िया है। इसी बीच और 1 रन, स्कोर में इजाफा हो चुका है। 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 62 for 3। दीपराज गांवकर 4 गेंदों का सामना करते हुए 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं। आयुष वेलेकर 17 गेंदों का सामना किया, 21 रन पर खेल रहे हैं। JSW सीमेंट जो कि सहयोगी हैं इस टूर्नामेंट के, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, JSW सीमेंट। तो 7वीं ओवर का आगाज होने जा रहा है। देखते हैं अंतिम गेंद इस ओवर की अंजाम क्या आता है। $62 for 3। गोइची लीग 2025 सांगे
प्रीमियर जो कि संघ क्रिकेटर्स ने आयोजित किया है। कलाई का बेहतरीन उपयोग, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, दूसरा रन लेने की कोशिश जरूर रहेगी। बिल्कुल तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। इस 2 रन के जरिए स्कोर 64 रन पर जा पहुंचा है। 64 फॉर 3। ये गेंद यहाँ पे और 1 रन। इस रन के जरिए में स्कोर में इजाफा। 7वीं ओवर जारी है। इसी बीच अगली गेंद 65 फॉर 3। ये गेंद बढ़िया गेंदबाजी, डॉट गेंद निकाली है। अरसलान खान बिना कोई रन बनाकर आउट हो चुके हैं। युवराज सिंह जिन्होंने अमय धामसीकर द्वारा उनको चलता किया। आविष्कार मोने युवराज सिंह के दूसरे शिकार, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाए। आयुष वेल्लेकर खेल रहे हैं। आदित्य दलाल जो कि 5 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाए और मयंक राउत ने उनको चलता किया। ये 3 विकेट जो गिर चुके हैं। छियासठ रन हो चुके हैं। फील्डर को बिट किया, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर तेजी से जा रहे हैं, बिल्कुल मैदान को चीरती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। स्कोर जा पहुंचा है 70 रन पर 70। शिवा सिंह जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर 2, दूसरी गेंद पर 1, तीसरा डॉट, फिर 1 और आखिरी जो पिछली गेंद थी उस पे चौका। यहाँ पे 1 रन तो ले लिया है और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ये यहाँ पे रन तो लेना चाहते थे और रन ले भी लिया। और थ्रो पे ये अतिरिक्त रन भी मिल चुका है। जहाँ पे 1 रन था वहाँ पे 2 रन बटोर लिए गए। इस 2 रन के जरिए स्कोर 72। 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का विश्लेषण, युवराज सिंह 2 ओवर 22 रन 2 विकेट। ऋत्विक नाइक 1 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं। मयंक राउत 2 ओवर 17 रन 1 विकेट। धीरज यादव 1 ओवर 13 रन, कोई सफलता नहीं। शिवा सिंह जो कि उनको भी कोई सफलता नहीं मिली है। शिवा सिंह 1 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं है। इसी बीच 72 फॉर 3 8वीं ओवर जारी होने जा रही है। ये गेंद यहाँ पे गैप नहीं ढूंढ पाए, फील्डर को पाया। फील्डर ने बहुत ही बढ़िया फील्ड करते हुए इस गेंद को रोका। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। डॉट गेंद निकाले हैं। स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर इन प्रोग्रेस। दीपराज गांवकर, ऋत्विक नाइक के सामने।
यहाँ पे हल्के हाथ से प्लेस करते हुए 1 रन ले लिया है। इस रन के जरिए स्कोर 73 फॉर 3। 20 ओवर्स की ये मैच, 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक ऋत्विक नाइक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद डॉट, पिछले गेंद पर 1 रन। देखना होगा इस ओवर की तीसरी गेंद पर क्या कर पाते हैं। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए ऋत्विक नाइक। ये फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया। 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर 74 फॉर 3। ऑन फील्ड अंपायर्स प्रशांत गड़ेकर और पुण्या पालकर। मेरे साथ स्कोरर हैं विराज तेंदुलकर। ये गेंद यहाँ पे और 1 रन आता हुआ। इस रन के जरिए स्कोर 75 रन, 75 फॉर 3। डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स वर्सेस सरकार 37 के बीच ये मैच चल रहा है। ये उठा दिया है, देखना होगा। गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में जा रही है। बाउंड्री यकीनन मिल सकती है, देखना होगा। जी हाँ, बाउंड्री को पार करते हुए गेंद, हालांकि होड़ लगी थी गेंद और फील्डर के बीच। आखिरकार गेंद ने बाजी मार ली है, बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो इस चौके के जरिए स्कोर में इजाफा होता हुआ। हालांकि काफ़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाए। 79 फॉर 3। एट्थ ओवर इन प्रोग्रेस। ये गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। इस गेंद पर बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाते। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 79 फॉर 3। डीजे नारू। धन्यवाद डीजे। हमारे स्पॉन्सर जो इसमें डेजर्ट एंड मोर, ये भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हालांकि उनकी टीम भी खेल रहे हैं। डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स वर्सेस सरकार 37। सरकार 37 नीलेश जी कावराल, जो कि एमएलए कुरछरेम कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी ये टीम है। इसी बीच 79 फॉर 3, 8 ओवर के समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के लिए अर्जुन को लाया गया है, अर्जुन रापरिया, जो कि रोड एंड से। ये गेंद दिशा से भटके, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर ने अपनी बाहें फैला दी हैं, तो वाइड बॉल का इशारा। स्कोर 80 रन, 80।
काफी तजुर्बा है दीपराज गांवकर के पास। इसी बीच ये गेंद कट करने की कोशिश इस बार नाकामयाब रहे। गेंद को गैदर किया, कीपर ने वापस कर दिया बॉलर के लिए। अर्जुन रापरिया जो कि अपनी निजी पहली ओवर डाल रहे हैं और उनके सामने हैं दीपराज गांवकर। 80 for 3, 9th over in progress। इस बार कामयाब हो चुके हैं, बेहतरीन गैप ढूंढ लिया है और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन को पार करती हुई सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची है। चौका बटोरते हुए दीपराज गांवकर। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और खेल दिया चौके के लिए। 84 for 3। इसी बीच फिर एक बार अर्जुन यहाँ पे अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड करने की जरूर कोशिश की, नाकामयाब रहे। 1 रन ले लिया। इस रन के जरिए स्कोर 85 रन पर जा पहुंचा है। 85 for 3। 9वीं ओवर जारी है। 9th over in progress। आयुष वेलेकर 24 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन पर खेल रहे हैं और दीपराज गांवकर 12 गेंदों का सामना करते हुए नॉन स्ट्राइकर पर तैनात हैं। 21 रन पर खेल रहे हैं। फील्ड में बदलाव करते हुए अर्जुन। ये गेंद यहाँ पे रन लेना चाहते थे लेकिन दीपराज ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे रन का मौका नहीं था। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, धीरे धीरे ये साझेदारी जो है पनपती हुई। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथ से प्रेस करते हुए 1 रन ले लिया है। इस रन के जरिए स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 86 for 3। 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9th over in progress। अगर इसी रफ्तार से जाते हैं तो प्रोजेक्टेड स्कोर है ये गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। 1 रन के लिए दौड़ पड़े। इस रन के जरिए स्कोर, हालांकि दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर दिया। तो इस 2 रन के जरिए स्कोर 88 for 3। 9 ओवर के समाप्ति के बाद डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स वर्सेस सरकार 37 आज का ये दूसरा मैच। तो अब 10वीं ओवर आनी बाकी है। इस 10 ओवर के बाद ये यहाँ पे स्विच शॉट खेल दिया, फील्डर को पाया। 1 रन, स्कोर 89। धीरज यादव को लाया गया है पेप्सी एंड से। अपनी निजी पहली ओवर लेके तैयार धीरज यादव।
इस बार फील्डर को पाया, रन लेने का मौका नहीं था। 89 फॉर 3। अपने फॉलो थ्रू में रोकना चाहते थे। फिलहाल 1 रन और जुड़ता हुआ। तो बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है धीरज यादव की, बिल्कुल लाइन और लेन के साथ। स्वीप शॉट खेल दिया, फाइनली की दिशा में गेंद गई है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाएगी, यकीनन जा चुकी है और स्कोर 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल 94 94 रन पर जा पहुंचा है। मौके पे चौका मारते हुए आयुष वेर्लेकर 41 रन पर जा पहुंचे हैं। बिल्कुल आयुष वेर्लेकर ने गति पकड़ी है रनों में। अब धीरज यादव की अगली गेंद, यहाँ पे 1 रन चुराना चाहते थे लेकिन बिल्कुल फील्डर के हाथ में गेंद गई तो मौका नहीं मिला। 94 फॉर 3। इस बार अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है धीरज यादव ने, ओवर की समाप्ति 94 फॉर 3 आफ्टर 10 ओवर्स। तो इसके बाद जैसे गेंदबाजी में परिवर्तन होगा वैसे ही कमेंटेटर बॉक्स में परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर समालोचक हरीश काकोडकर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं। प्रिंस ओपन एयर हॉल पाजी मॉल सांगे, ये भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं। प्रायोरिटी कंस्ट्रक्शन, कैरोज क्रूज जो कि एक्स चेयरपर्सन काउंसिलर सांगे म्यूनसिपल, रविंद्र उपाध्याय ब्रांच मैनेजर कर्नाटका बैंक जो कि हमारे स्पॉन्सर, रिज्मा ग्रुप, गोल्डन ओवर ली जा चुकी है। तो इस ओवर में जो भी रन होंगे इस ओवर में वो डबल हो जाएंगे। फिलहाल जैसे रन आते हैं वैसे हम आपके लिए बता देंगे। 94 फॉर 3। ये अपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल बढ़िया प्रयास था, डॉट के निकाली है शिवा सिंह। ये गेंद यहाँ पे 1 रन, इस रन के जरिए स्कोर 5। याद रखिएगा ये गोल्डन ओवर जारी है, गोइची लीग गोल्डन ओवर। ये बढ़िया गेंदबाजी, मौका नहीं दिया, जट से स्टंप बिखेर दिए लेकिन बल्लेबाज आयुष वेर्लेकर सुरक्षित अपने क्रीज में तैनात थे। कलाई का उपयोग मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है, 1 रन ले लिया है और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 11th ओवर इन प्रोग्रेस। शिवा सिंह फिर से तैयार। स्क्वायर की दिशा में खेल दिया है, क्या 2 रन ले पाएंगे? 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। देखना होगा वहां पे बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया है शिवा सिंह। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 1 डॉट 1 2, यानी कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 5 गेंदों में
4 रन इस ओवर में आ चुके हैं। स्कोर 98 फॉर 3। तो गोल्डन ओवर की ये आखिरी गेंद। यहाँ पे गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रहे हैं, देखना होगा क्या चौका मिल जाएगा या नहीं। जी हाँ, आखिरकार चौका मिल चुका है और इस चौके के जरिए जो स्कोर डबल हो जाएगा वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 102 फॉर 3 इन 11 ओवर्स। तो अब गेंदबाजी में बदलाव होगा, वैसे ही कमेंटेटर बॉक्स में बदलाव। हमारे अंग्रेजी समालोचक हालांकि हरीश काकोड़कर आ चुके हैं। आपका नाम पहले लिया था लेकिन फिलहाल फिर एक बार अंग्रेजी समालोचक जो कि हरीश काकोड़कर। तो टोटल स्कोर गोल्डन ओवर के बाद 110। Nicely bowled here by Shiva Singh. 1-1-0 for 3. We are into the 12th over, end of the golden over. Aishwarya playing well on 42. Swept away, man in the deep. Deepraj batting on 31. So good stand and going at a pretty good strike rate as well. And that is what Deepraj was talking about, having a total of somewhere around 180. That didn't convince me, that 180. These are such wickets where we see 200s being chased. And in the morning game itself, 22 for 4, Chogale Global, and then posted a total of 192. And it was chased in just 15 overs. Going for the reverse. No appeal from the bowler. Just a half-hearted appeal from behind the wickets there from Ahmed Amshekar. They placed that man more sort of point region for that reverse or switch whenever he offers that. Ayush, he loves to play that shot. Another one down the ground, end of over number 12 with a single. 114 for the loss of 3. Ayush Wellekar batting on 44 of 36 and Deepraj Gaonkar 33 of 21. So far, 6 different bowlers have been used. Yuvraj Singh up the order, picked up a wicket of the very first ball. Rutvik Naik, wicketless, but bowled decently. Mayank Rawat picked up a wicket in his first over. And he'll be brought back definitely at some point of time. Dheeraj Yadav has bowled 3. Shiva Singh has bowled 2 and 1 over for Arjun Rapriya. That's the bowling combination. 6 different bowlers used. So a lot of options here for Sarkar. 37. So Arjun Rapriya has been asked to go once again, one more time.
into his second over. So man at long on mid-wicket, deep square leg. Deep point and wide long off. Gets a single down. Might be looking for a couple of runs. Good running with the wickets here by Deep Raj. He's very quick. Yeah, he didn't time the ball that well, but he exactly knew that there is an opportunity as the fielders are more close towards the rope edge of that boundary. So once you don't time and it just lands off 3/4 of the boundary, then the chance of getting a couple of runs. Single at the point region. Sarkar 37. Priority Titans have done a very good for themselves by chasing their total in just the 19 overs. They have definitely upped their net run rate. That has put pressure on both these teams. Once again, the same fielder coming into action. So bowling the back of length. The batters are also just milking along with singles at the moment. Still pretty long batting lineup left of Desert and more Avengers. They are the only team at the moment winning 2 out of 2, playing the third one. Looking good with their combinations. They must have thought about the target. 180 was just spoken by the captain, but they might be looking for maybe 200 plus. Big appeal and the finger coming up. Trying to just whack the ball across the line on the leg side. Has been trapped in front of the wicket. Deep Raj. And Arjun Durapriya strikes in his second over. Gets rid of the captain of the opponent team. Deep Raj walks back. 118 for 4. Deserts and more Avengers in over number 13. So in comes Tanush Kotian. Punches down the ground, stopped by the fielder in his follow-through. Player of the series in the previous edition of Ranji Trophy, not this season, but the past season. Tanush Kotian, and also player of the finals in Irani Trophy. It's a big name coming and playing in the GOICHI League, and certainly will be looking to make and take this opportunity to get noticed as well.
Goan cricket is certainly flying high with flying colors this season. I'll come back to that point. End of over number 13, 119 for 4. Correct, down the ground. We'll be looking at least for a couple. Placed it really well away from the fielder. So once you play slightly wide of the fielder, then opportunity to take 2 runs. This is a good learning phase for someone like Ayush Vellekar as well to play alongside Tanush Kotian. I was talking about a great experience, Yash. Another one off the back foot, but this time straight to the fielder. Talking of the experience, not easy to be the player of the series in Ranji season. Any season it might be. Highly talented, highly skillful. Lovely bowling. This is nicely bowled by Dheeraj Yadav. He bowls it quick and bowls in the right areas. Doesn't have that much of height compared to other bowlers, but that's the reason why ball just comes flat. Not much of elevation from his side. Sometimes bowl even with side action, side arm. Another one chipped down the ground here by Ayush Vellekar. He's played really well for his 46 so far. He's been beaten a couple of occasions, but he has come back with a strong mentality the next time around. Another one down the ground, looking for a couple. No, there was no misfield. But they are doing it singles at the moment. That boundary is being eluded by the bowlers. SARKAR 37, this is a good phase for them. And if they can chip in with 1 or 2 wickets here, then they'll be strongly coming back. Doing very good at the moment, the bowlers. Just giving the singles to the batting side. That marks the end of over number 14, 125 for 4, Avengers. So Ayush Vellekar batting on 47th, Tanush Kotian 5 of 5 with all the singles at the moment.
And the batting power play. Not chosen, but it's an obvious batting power play. If you don't take it in 14 overs, then it will begin in 15 and end in 16. So 2 overs of batting power play. Yeah, well bowled here. Slightly more air given by the bowler, bowling from round the wicket. So defensive line, but this is very useful in T20 cricket, the defensive line. Lovely shot, up and over, might just go away from the fielder. And that's the 50 here for Ayush Wellekar. He has been courageous at times, gritty, and some class as well. This is showing that he has got a clever side as well, going for the free hit and being successful in that. Very well brought off half century here by the young boy, Ayush Wellekar. He started off very well and then oh, that was quick. Very quick ball. Well, the bowler, Shiva Singh, didn't like. He was going for the switch hit and saying, yes, I've got this one as well. Now hit reverse. Just getting a leading edge going down towards the short tournament region. 5 coming off the first 3 balls so far. What a ball that is. Well, just turned sharply. Just wanted to play it on the leg side and just went away. Still, there is a lot of turn on this wicket. There is help if you want to bowl the way Shiva Singh is bowling at the moment, giving it a lot of rip. Played on the leg side. He's trying to cram the room and run out opportunity, but makes it easily in the end. Very well run. He just charges for the first run and just sees the partner and calls loudly. That makes it much more easy. This time, nowhere to run. No, he was sent back on time. The ball was straight to the fielder at the backward point. Tanish Kotiyan was looking for a single. No run in it, absolutely. And that marks the end of over number 15 with a dot ball. 132 for 4. Deserts and more Avengers. Surprisingly, we see no Tushar Sawant into the bowling attack so far. So they are relying on the Australian bowlers at the moment and some overs from the medium pacers, Yuvraj Singh and Rutvik Naik. Dhirav Yadav has finished his spell, 4 overs, 29, wicketless, but quite economical. One for 17 in the 2 overs, brought back into another spell here by the captain, Ishan Gadekar.
Swept away. This might just be a boundary. No chance for the fielder to cut that off. Played with the spin and placed it really nicely away from the fielder. So he is going to just free his arms at this moment. He knows that he has scored a 50 and in now time to accelerate. Ayush Welekar, that's the first intention against Mayank Rawat. Another one. This might be in the air. This should be an easy chance here. No power behind that. And that's been just scooped down straight into the throat of the long on region. And that's the end of the innings here from Ayush Welekar. I just wanted to place it more between the gap at the cow corner region and long on, but it just went straight. And that is the end of innings of Ayush Welekar. But it's certainly been impressive. And he has certainly shown that he has got the skills to play at this level against the Australian players. That is a good sign for him in the coming days. 136 for 5 in over number 16. So current run rate at the moment is 8.87. Projected score is showing 177. Last of the free hits has been taken here by Sumit Kumar. And the ball has been fired in by the bowler. Quick ball, fast, and a couple of runs taken. Mayank Rawat not happy with that performance in the deep, but it was comfortable too. It didn't come onto the bat nicely. Very well bowled, I must say. You need to have those variations. Off the back foot, down the ground, another single. Sumit Kumar has come on to give company to Tanush Kotian. So both the Australian players in the middle for Avengers. And this is where exactly acceleration is required. And you expect that more from Australian players. Played it on the rise. It was not a ball to be swept. But found a fielder in the deep. Another single. He's bowling quick at the moment. He's not just flighting the ball. No chance here in this fag end. Last 5 overs. Another quick ball. And that is stepped around on the offside for a single. Marks the end of over number 16. A success for Mayank Rawat getting rid of Ayush Welekar. And 141 for 5 after 16 overs. Once again, sweeping the ball towards the square leg region, getting a single. So last over of Shiva Singh. So he'll be bowling the 17th over. And then one more over left of Mayank Rawat. And Arjun Rapriya has 2. So all the 4 overs most probably
is what my guess is. Might be bowled by the Australian players, who still got 4 overs among themselves. Another ball banged in, slight fumble, but just going to get another single. So very good captaincy as well, I must say, from Ishan Gadekar. He measured it very well. He knew that the batters were kept down just to take the advantage of the batting power play and the last 5 overs. But he also kept his best bowlers. That is what it's all about. It's about your activeness. It's about your thinking. It's about your calculativeness in the middle. You see the game plan of the opposition side and just try to change the game plan accordingly. That is what brings you success in many of the T20 format. So again, well bowled, missed by the batter, trying to just drive the ball. It was not drawable. Nameya, so far, it's been difficult for someone who has not kept the spin at this pace or at this variation. Doing a decent job. Oh, that is really quick. That might be more than 100 Ks, 110 Ks, the way he's bowling at that pace. Shiva Singh mixing up it really well, making it difficult for both the batters to accelerate. Another one driven here, looking for a couple of runs. They will just find a single. That marks the end of over number 17. Just the 4 singles coming off that over. 145 for 5. They bowled really well, Sarkar 37, and fielding as well. The ground fielding has been good. Imposed. They've taken their catches and stuck to the task. Especially the ground fielding was good so far. Sarkar 37. This is all come down to net run rate, I feel. If there is a victory for Sarkar 37, Priority Titans have won 2, then Deserts and Avengers also will end up on 2. So all the calculations, permutations still on here in this GOICHI League. And that's why posting a good total on the board becomes important. They were looking for 180. But at the moment, the way the bowlers are bowling, they have kept the things in check. They're just getting the singles. They're trying hard, but nothing has been spared easily at the moment by the bowlers. Whacked away. There's a man down there, and that's a fabulous catch. Arjun Rafria, he headed down quickly and just slide it down and taken a good catch. That shows the standard of fielding in this competition, and these Australian players keep for themselves. That is exactly what we see in IPL, and that is exactly what is required to make your name, not only in bowling and batting department, but fielding has become a very, very important aspect. Look how quickly he charged on to that ball.
And their technique also shows this comes after a lot of practice on the field. Very well executed that catch by Arjun Rapriya. 149 for 6, and now looking slightly away from that 180. Can they breach that? Can they breach 180 will be the question. This is really good phase. This is Mayank Rawat has picked his third wicket into his fourth over, and they were being put chain on the running. They have been put stranglehold on the boundaries and the sixes, and that is where you tend to create a false shot. This time slogged away. What a strike. Hiram Parab just coming and blowing one out of the park. Sensational start here from Hiram Parab. Goodness me, when everyone was struggling, he's saying, I already come set from the dressing room. This is not the first time that I witnessed the Bookham Trophy 25th edition. He was playing against Captain Darshan Missar, banged him 4 sixes in that 1 over. That's another one. That is another one. That is even mightier. Oh, he's come with tremendous force here. Hiram Parab. This is exciting stuff. And that is a very good finish in this over. They were struggling at one point of time. Hiram strikes 2 like missiles. And 18 gone, 161 for 6. So Mayank Rawat finished with 3 for 42. And those 2 sixes just got him to go more than 10 runs per over. Otherwise, he could have gone for somewhere around 7.5, 8 runs per over. And one more time, we have to search the ball. And old used ball has to be brought in the action. So looking good to post 180 plus with those 2 sixes, and Hiram's strike has given them a little bit of hope of going towards their 180, 190. So it will be the third over for Arjun Rapriya, and that is what he's going to bowl. He's just going to bowl the 3 overs. Mayank Rawat was brought from the other side. That stops Arjun Rapriya from bowling his full quota of 4 overs. Last over will have to be bowled by either Rutvik Naik or Yuvraj, but Rutvik might be a better option, is what the captain might feel, but it depends upon all the brains there. Wide called by the umpire. Sumit Kumar is still there on the wicket. We have seen how these last 2 overs or last big hitting can create an impact in the game. Many of the players might not get too much of time on the wicket, but whenever they came and they hit the ball crisply for maybe 7 or 8 balls, they can change the complexion of the entire game. Picked away on the leg side. Oh, that's a long 6. What a flick. Powerful wrist here on the showcase from Sumit Kumar. It was a lower full toss that was very well clipped away. Tremendous power generated off the wrist to get that distance. Excellent piece of timing. So some entertainment now.
3 balls, 3 sixes. 2 from the bat of Hiram Parab, 1 from Sumit Kumar. And looking at the way the game is heading, we might just see a few more as well. Arjun Rapriya has just been welcomed with a 6. Bowled a wide first one. So we are still searching for the ball to come back in play. It has gone up quite far. So another one, this just not time. There's a fielder down there and it will be taken in the deep cow corner region. He went for one more shot, hitting the bottom part of the bat. And that's the reason why he just went more towards the mid-wicket region. Nothing wrong from his part in going for the big ones. This is the last few overs, but Arjun Rapriya strikes immediately after being struck for a 6. 7th wicket down, dangerous looking Sumit Kumar departs. So in walks Soham Panwalkar at number 9. The idea will be to get somewhere around 180 and 85 runs for Avengers. Coming at number 9, having no time to get your eyes set in. Either you have to take a single or just whack the ball right from word go. And give strike to someone who has hit 2 sixes of 2 balls. Hiram Parab striking the ball really well, crisply. Slashed hard, but bowled well outside. Wide call by the umpire. Well, he's not happy with the call, the bowler. Well, that extra effort that you have to bring in this heat is more painful than the wide himself. It's really hot to even finish with your quota of overs at this stage. And bowling a no ball and a wide makes you bowl with little more extra efforts. So not able to get a single here to get Hiram on strike. 169. A very close game at the moment in terms of the group stages of who is going to qualify for the semi-finals from this Group A. Whack the ball. This might be the boundary. Away from the fielder. And a fantastic shot. Was just maybe telling his partner he was just rolling the fingers over the ball, trying to bowl the off-cutter at the wideish line. And he went hard at it and getting the boundary, a crucial boundary.
Moves the score to 173 for 7. Played down the ground. We'll be looking for a single, and here will get the strike of the last ball. 174. 7 balls left. Yeah, this guy can strike. Not the first time that I've seen. And 6 is at the other side. These are the longer dimension, big ground this side, Pepsi end. But here quite shorter. So this boundary will be in risk. If this big man strikes, the tall fast bowler of Goa Ranji team, Hiram Parab, who can strike really well. He's got the force, and he believes that he is an all-rounder now. He can be. The way he's hitting, especially in a T20 format. Now that's much better. Not in his range. Banging the ball short and getting it on top, close to the chest height. So pretty well executed here. The last delivery from Arjun Rapriya. 19 overs gone, 174 for 7. Just the 1 over to go here in the first innings. Tushar Sawant has been replaced and the impact player has been introduced. Sumira Namonkar has been brought in the field. Played down the ground, and that is a straight hit. Gone a long way, gone the long distance. Soham Panvelkar striking against Ritwik Naik of the very first ball. That's a very good start to this over, number 20. Going deep, the back leg inside, and showing the perfect technique. Using the depth of the crease to perfection, and hitting it straight in the V area. So getting a boundary there. Another one. There is a man down there. He's going straight to his throat, and he has to walk back. Soham Panvelkar came at a time. He had to just whack the ball around. So that's nothing wrong as part of the batter trying to get some quick runs. Looking for a strike down the leg side. But the fielder taking the catch. That marks the end of wicket number 8. 178 for 8 with 4 balls left. So 180 for 7.
4 balls left. Keith Pinto walks in. Yeah, that's better. That's better from the young boy. Well, no need to take charge here, and single is going to be enough, as it's going to give strike to Heram Parab. We struck 2 sixes in the 3 balls that he has been out in the middle. So he's getting 3 chances to finish well. Might not be 3 sixes, but just hoping that he might just get 1 at least, or maybe 1 6 and 1 boundary that will end the score to somewhere around 190 plus. And he can very well do that. Rutvik has bowled many a times against this boy. He looked to be bowling short. He's not going to bowl anything in his arc. He knows that bowling in the arc can just be brutal. 181 at the moment with 2 balls left. Will it be the same ball? Will it be the replay, the Xerox of the previous one? Or will it be something else, the slower off quarter, or maybe the Yorker? What's in the mind of Rutvik? He plays nicely down the leg side. We'll be looking for a couple of runs, looking for a run out. And he completes it easily. Not the strongest of the throws from the cow corner region. A slow throw, loopy throw, and getting 2 runs easily in the end. That will get Heram Parab back on strike with those 2. 183 for 8. Here comes the last ball of the first innings. Rutvik once again. That might be run out. No, just missed it. And we might just be in for the review here. Going for on the top for the referral of the third umpire. Rohit Asnarkar is the match referee and the third umpire for this game. So let's see what comes out. Here is throw at the non-striker's end, and it looks close. So it's a tough decision that he has to call for a run here. A run will be added, or it will be the same score, 183. So they are still going through that slow-mo replay and trying to ascertain. So out is the signal. So out is the signal, and that's the end of 20 overs. Heram Parab got out through a good job by the wicketkeeper. 183 is what they have posted, and 184 runs required. 184 runs required here to win the game for Sarkar 37. So that's how the scoreboard looks like. Arslan Khan went off the very first ball that was bowled by Yuvraj Singh. And then Avishkar Mone showed some signs of his batting skills. 2 sixes, 3 boundaries for 25. Ayush Velekar, pick of the batsman. Only half century in this game. And then Dipraj Gaonkar, he added a good partnership with Ayush. Tanush Kotian tried hard. Both Tanush and Sumit Kumar scored 13. And a little to handy knock from Heram Parab with those 2 sixes. That is how they posted 183 for 9. And will require 184. That's how the scorecard, bowling card looks like. Only 2 overs for Yuvraj Singh.
He got a wicket off his very first over, 2 wickets for him. Rutvik Naik picked up a wicket, and Mayank Rawat was the pick of the bowlers. 3 wickets, but slightly on the higher side. Dheeraj Yadav wicketless, Shiva Singh wicketless, but they were quite frugal in their bowling performances. And that's how the bowling card looks like. I think they will be happy to restrict them to 183. 184 the target, and we'll come back in a short time.
टेस्ट। सभी का स्वागत, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत। आप सुन रहे हैं नदीम अहमद को, और नदीम अहमद की ओर से सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। एक 184 का पीछा करेगी टीम। दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुंदर गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है। हैरम पर्व गेंदबाजी के लिए बिल्कुल पवेलियन की ओर से गेंदबाजी के क्रम में सनत नेवगी और उनके साथ ईशान गढ़ी का स्वयं कप्तान बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का मनोरंजन मजा उठा रहे हैं, उन सभी का स्वागत। सनत नेवगी फिर से एक बार बल्लेबाजी में। संभलकर पूरे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश। बिल्कुल डॉक्टर वेंकटेश नेवगी के दो होनहार पुत्र, एक सनत नेवगी, दूसरे शांतनु नेवगी। राम परब हम अक्सर जानते हैं कि बिल्कुल अपनी तेज गेंदबाजी, अपनी गति से जाने जाते हैं। संभलकर फिर से एक बार पूरे बल्ले के साथ रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई जल्दबाजी नहीं। जानते हैं कि लंबा सफर तय करना है और विकेटों का होना काफी जरूरी। एक अच्छी शुरुआत यहां पर देने की कोशिश करेंगे सनत नेवगी के साथ। ईशान गढ़ीकर कप्तान है, कप्तानी भरी पारी खेलनी होगी। देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत देते हैं। 1 से 3 तक पहले मैंडेटरी पावर प्ले का क्या पूरा फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। तो ऑप्शनल पहली फ्री हिट ली गई है। इशारा अंपायर पुनिया पालकर की ओर से। बोल्ड कर दिया है, मगर कोई खतरा नहीं, क्योंकि पहली ऑप्शनल फ्री हिट ली गई थी। लाइन से बिल्कुल पूरी तरह से चूके और बिल्कुल स्टंप पर गेंद। फिलहाल कोई खतरा नहीं बल्लेबाज के लिए, क्योंकि 5 ऑप्शनल फ्री हिट ली जा सकती है। उस पर रूल्स वही रहेंगे, यानी कि बल्लेबाज केवल रनआउट के सिवा किसी प्रकार से आउट नहीं हो सकता। धीमी गति से गेंद पूरी तरह से चकमा खा बैठे। बिल्कुल गति परिवर्तन, सुंदर गतिमान फेरफार। ऑफिशियल अंपायर मेरे दोस्त प्रशांत गडेकर भी काफी मुतासिर होते हुए इस गुजराती अल्फाज गतिमान फेरफार, यानी कि गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, रफ्तार की तब्दीली, उर्दू में वेगम योक्का मार्पू, तेलुगु में गति बदल, मराठी में गति बदलावने, कन्नड़ा लैंग्वेज में इस प्रकार से विवरण इस गेंद का। पटकी हुई गेंद संभलकर पूरे बल्ले के साथ 1 रन की में हामी बनी और बिल्कुल दौड़ रहे हैं। स्टंप पर टारगेट था, मगर निशाना चूका और 1 रन की कोशिश यहां पर करते हो, मगर सुंदर 1 रन के साथ अपना खाता खुलते हुए सनत नेवगी। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी के साथ केवल 1 रन जो कि दिए हैं पहली ओवर की समाप्ति। और पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। सरकार 37,
सरकार 37। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया ईशान गडेकर ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए डेजर्ट एंड एवेंजर्स और 184 का लक्ष्य रखा। मेरे साथ कॉम्बॉक्स में मौजूद हरीचुन के साथ बिल्कुल बंटी उडेलकर, काफ़ी मशहूर और मारूफ अच्छे कॉमेडियन, आप कह सकते हैं गोवा के सरजमीन पर कृष्ण मुखर्जी। क्या एक्टिंग उनकी कमाल की, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, सिम्बा में भी अपने अदाकारी से काफ़ी दर्शकों का मन जीता उन्होंने। अच्छे सिंगर हैं, अच्छे कमेंटेटर, एंकर। दही हंडी में तो बंटी उडेलकर का पहला नंबर पूरा गोवा के सरजमीं पर। फिलहाल गेंदबाजी में आए हैं सुमित कुमार। शुरुआत ले चुके थे, अभी गार्ड ने हरी झंडी भी नहीं दिखाई थी, ट्रेन निकल पड़ी थी। सुमित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एक गोवा लाइव के कास्ट के टेक्नीशियन, कैमरामैन शिवम। धीमी गति से गेंद, सुंदर का ये बिल्कुल बैक ऑफ हैंड सुमित कुमार की ओर से, लंबे ऊंचे कद के, बिल्कुल ग्लेन मैकग्राथ की तरह लंबे। क्या सुंदर मैदान, कोरताली सांगे। पृथ्वी गेंद इस बार खेलने की कोशिश पूरी तरह से चुके, सनत नहीं होगी। फिर से एक बार थोड़ी सी शेकी स्टार्ट उनकी, मगर जब टिक जाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं। धीरे धीरे उनमें बनता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सनत को टिकना होगा। यहाँ पर चुनौती भरी बल्लेबाजी है। निश्चित तौर पर सरकार 37 के लिए 184 का लक्ष्य, सुबह 192 का लक्ष्य 15 ओवरों में चेस किया गया था। धीमी गति से इस बार पढ़ लिया था और फुल टॉस पे सुंदर शॉट, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात मेहांक धारवाड़कर, जिन्हें लाइव वायर कहा जाता है, बिजली की तरह तेज मैदान पर। वेल एजुकेटेड पेरेंट्स का होनहार बेटा मेहांक, पापा इंजीनियर, ममा एडवोकेट और स्वयं बिल्कुल एक होनहार क्रिकेट खिलाड़ी। और मेहांक को बिल्कुल सर्कल में लाया गया। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करने की कोशिश होती हुई सुमित कुमार की ओर से भी देखना होगा कि किस और डीप स्क्वायर लेग में जो कि मेहांक को तैनात किया गया है। हालांकि वे थोड़े से मिड विकेट पर थे। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्बॉक्स के सामने मैं कह सकता हूँ। हेलो मेहांक। अच्छा पंच बैकफुट पर, अरे कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर स्वयं कप्तान बाएं हाथ के और दाएं हाथ के सनत। हालांकि सनत बाएं हाथ के होते, निश्चित तौर पर सनत जय सूर्या की तरह बल्लेबाजी करते, जिस बल्लेबाज के नाम एक विश्व रिकॉर्ड 6 गेंदों में 6 चौके लगाने का। हालांकि हम सब जानते हैं कि युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट बोर्ड को 2007 के T20 वर्ल्ड कप में, जब थोड़ी सी बहस हुई थी स्टुअर्ट बोर्ड और युवराज सिंह के दरमियान। गेंद हवा में मिस टाइमिंग हो चुकी है, मगर ओ यहां पर कोशिश जबरदस्त। जान गए कि यहां पर जीवन दान मिल चुका है कप्तान ईशान गडेकर को। पूरी तरह से टाइमिंग बिल्कुल नहीं कर पाए, मिस टाइमिंग के साथ गेंद काफी देर तक हवा में, अच्छी कोशिश गेंद तक पहुंचे, मगर अच्छे पोजीशन में बिल्कुल नहीं थे फील्डर, वरना ये होता पहले विकेट का पतन। अपनी गलती को बिल्कुल माना कप्तान ने। इस प्रकार की गलतियां काफ़ी महंगी साबित हो सकती हैं। अभी भी लंबा सफ़र दोनों ही बल्लेबाजों पर रहेगा। रनों की यात्रा का दायित्व किस तरह से निभाएंगे रोल,
क्रीज पर, ये देखने वाली बात है कि फिलहाल सनत स्ट्राइक पर, सुमित कुमार नए जोश पूरी उमंग के साथ गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद पुल करने की कोशिश, हल्की सी दिशाहीन गेंद, मगर फेयर डिलीवरी आकी गई और एक बेहतरीन ओवर की इस समाप्ति। इस ओवर में केवल 2 रन दिए हैं सुमित कुमार ने, तो 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 3 बिना किसी नुकसान के, लक्ष्य 184 रनों का। तो आप सभी दर्शकों को बताते चलूं कि सांगेम क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित इस शानदार T20 टूर्नामेंट पावर्ड बाय श्री सुभाष फलदेसाई, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर, और काफ़ी सारे स्पॉन्सरों ने इस टूर्नामेंट की भी बिल्कुल मदद की है। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल कॉम बॉक्स के सामने एक होनहार अमित दामशेखर, एक T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज गुजरते हुए, वॉरियर्स टीम जो कि काफ़ी मशहूर साबरडेम से, जब मेरी शुरुआत हुई थी क्रिकेट कमेंट्री में, बिल्कुल गुमतेश्वर वॉरियर्स काफ़ी होनहार टीम थी T20 में, जिनके कप्तान थे असलम शेख, उसके बाद सागर गोसावी, तुषार सावंत, अर्कस ब्रदर्स, हरीश कुट्टी, हरीश नाइक, विकास देसाई, पुष्पशील देसाई जैसे होनहार खिलाड़ी उस टीम में शामिल थे, और वो टीम बड़े से बड़े टीम को मात देती। जिस प्रकार से गोवा पुलिस, जिन्हें कहा जाता है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस, उन्हीं में कभी कभार हरा चुकी है टीम गुमतेश्वर वॉरियर्स पॉलिटिक्स 11 के साथ, उनके अक्सर घमासान रहती थी फाइनल के मुकाबले में। तो उस टीम के एक होनहार खिलाड़ी रहे थे अमय दामशेखर, तुषार सावंत, जो अभी भी इस टूर्नामेंट के साथ भी जुड़े हैं। काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल क्रिकेट, एक बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए वॉरियर्स के खिलाड़ी हैं। उन सभी खिलाड़ियों का स्वागत। बढ़िया पंच, थिक आउटसाइड एज के साथ गेंद को रोका जाएगा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा की ओर। है राम पर, अब बिल्कुल जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं ईशांत शर्मा की याद दिलाते हैं। गोवा रणजी के बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज है राम पर, अब जिनकी रफ्तार 128 से 130, कभी कभार 131 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। और एक बिल्कुल थरो जेंटलमैन, न सिर्फ खिलाड़ियों की अपने, बल्कि कभी कभार कमेंटर्स की भी तारीफ करते हैं, उनकी भी हिम्मत अफजाई करते हैं। थैंक यू हेराम फॉर योर गुड कमेंट्स इन द मॉर्निंग। फ्री हिट का मौका, तीसरी ओवर, यानी कि मैंडेटरी तीसरी पॉपुलर ओवर, स्कोर केवल 4। इस बार लिया है फ्री हिट ईशान गडेकर कप्तान ने। केवल 1 ही रन मिलेगा, 2 फ्री हिट हालांकि ज़ाया हो चुके हैं। मगर जिस प्रकार से 6 ओवरों को 3 मैंडेटरी ओवर, 2 बैटिंग पावर प्ले ओवर, 1 गोल्डन ओवर के साथ तकसीम किया है, डिवाइड किया है, बिल्कुल इस टूर्नामेंट को और बेहतर और इंटरेस्टिंग बनाता हुआ 5 ऑप्शनल फ्री हिट जो बल्लेबाज ले सकते हैं अपनी चॉइस पर। 2 फिलहाल ले चुके हैं बल्लेबाज सरकार 37 के, दोनों पर कुछ खास टाइमिंग नहीं हुई। और हिराम परब की बिल्कुल तीसरी ओवर, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर के बाद। अब तीसरी ओवर में भी केवल 1 रन दिया था पहली ओवर में। अब हालांकि 2 गेंद हो चुकी, फिर से एक बार हाथ घूमता हुआ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हुए पुनिया पालकर, फ्री हिट का मौका। ओहो, बड़ा शॉट, अगर संपर्क होता तो गेंद बिल्कुल सांगे से खुरचड़े इतने दूर चली जाते हैं। जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर है इस मैदान से।
और इस बार लग चुका है बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग, वहां पर खिलाड़ी तैनात मिडफील्ड की दिशा की ओर 2 रन की कोशिश यहाँ पर, मगर कोई फंबल कोई चूक नहीं, बिल्कुल क्लीन पिक और बेहतरीन थ्रो विकेट कीपर की ओर। तारीफ करनी होगी फील्डरों की, जिस प्रकार से अच्छी फील्डिंग हुई, कोई मौका नहीं दिया 2 रनों का, इस प्रकार से बिल्कुल रनों पर अंकुश लगाने का कार्य ज़बरदस्त होता हुआ गेंदबाज और उनके साथ फील्डरों की ओर से। कप्तान दीपराज गांवकर जो कि डेजर्ट एंड मो एवेंजर्स के काफ़ी बेहतरीन इंसान, एक ट्रू जेंटलमैन दीपराज गांवकर। हालांकि मैच की शुरुआत में थोड़ी सी इस बार बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो स्क्वायर इन द एयर, बिल्कुल फील्डर जिस प्रकार से खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लग तो ये रहा है कि शॉट ऑफ क्रीज है, फिर देखना होगा क्या निर्णय आता है। और जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक हो शुबा नहीं, बल्ला बिल्कुल हवा में, और ये देखिए रेड लाइट जल चुकी है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यानी कि पहले विकेट का पतन होता हुआ। और मैंने अभी नाम लिया था हरीश नाइका, यहाँ पर आ चुके हैं। हरीश आइए, हरीश साहब। जो कि फिलहाल एक पुलिस ऑफिसर हैं। तो अच्छा कैमरा वर्क, तारीफ करनी होगी कैमरामैन की, जिन्होंने पूरा फोकस किया था लाइट्स पर। गोल लाइव कास्ट के सौजन्य से आप सभी दर्शकों तक इस मैच का आंखों देखा हाल जो कि सुनाया भी जा रहा है और आप देख भी पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बैनर्स होर्डिंग्स जो कि लगे हैं। श्री नीलेश कबराल, एक सही निर्णय, जब टेक्नोलॉजी है तो बिल्कुल उसका पूरा फ़ायदा उठाया अंपायर पुनिया पालकर, जो कि बिल्कुल एक उभरते हुए अच्छे अंपायर जिसे मान्यता प्राप्त, उनके साथ प्रशांत गड़ेकर। ओ यहाँ पर कमाल का शॉट, 4 रन, 6 रन माफी चाहूंगा। देखिए बिल्कुल जिस रफ्तार से गेंद आई थी टॉप एज के साथ, बिल्कुल गेंद डीप फाइनल की दिशा की ओर, पूरे 6 रन। क्या बढ़िया शॉट है, बिल्कुल T20 स्पेशल शॉट। अब ओवर की समाप्ति इसी के साथ 3 ओवर समाप्त, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तारीफ करने की हैराम पर की, हालांकि आखिरी गेंद में छक्का दिया, मगर जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की है कमाल की। 1.5 ओवर्स में केवल 5 रन दिए थे, हालांकि आखिरी गेंद पर छक्का लगा, तो कुल मिलाकर 11 रन उन्होंने दिए अपने 2 ओवरों में। अब आए हैं मेहांक धारवाड़कर, जो कि गेंदबाजी करे में पेंजिम जिमखाना मेंबर्स लीग के एक होनहार खिलाड़ी, जोश से भरपूर और रेडी टू गो। बिल्कुल उनमें जो एग्रेशन, वो विराट कोहली का। स्वागत है सिद्धेश नाइक का, सुपरवाइजर इस मैदान के। बाबू नाइक, उनके भाई शैलेश नाइक, नाइक ब्रदर्स टेनिस के स्टार खिलाड़ी, अकस्मात टीम के। फुल टच गेंद संभल कर पूरे बल्ले के साथ खेल दिया है। शॉर्ट गेंद को बिल्कुल बीट कर गेंद रफ्तार पकड़ती हुई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर बिल्कुल करारा चौका, डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट के साथ सुमिरन आमोनकर ने गेंद को सीमा रेखा पार भेज दिया है। बिल्कुल अच्छा बॉडी बैलेंस और ड्राइव, हालांकि वहां पर खिलाड़ी थे, डाइव लगाई थी, मगर गेंद निकल पड़ी बिल्कुल गोली की रफ्तार की तरह। 4 रन। इसी बीच बिल्कुल हल्की सी गेंद नीचे को रही, मगर जिस प्रकार से उम्मीद की थी बल्लेबाज की गेंद उछाल प्राप्त करेगी,
नहीं कर पाई और एक डॉट गेंद के साथ एक अच्छी वापसी, यही खासियत है मेहांक धारवाड़कर की। हालांकि पहली गेंद पर चौका लगा, जिस प्रकार से वापसी कर रहे हैं बिल्कुल कमाल की, एक योद्धा खिलाड़ी मैं तो कहूँगा, नेवर से गिव अप, उनका एटीट्यूड, बढ़िया गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज, फील्डर बेमिसाल। धीमी गेंद से इस बार हाफ वॉली पर बिल्कुल हल्का सा वहां पर अपील और आउट। मेहांक धारवाड़कर खुश बिल्कुल उनके हाथ से लेकर गेंद स्टंप पर। केवल इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा इस प्रकार के डिसमिसल अब इस मैदान पर भी दिखाई देता है। ये देखिए रिप्ले में ये शॉट लगा बिल्कुल इसे कहते हैं लक फेवर्स द ब्रेव। अभी अभी तारीफ ही कर रहा था मैं मेहांक धारवाड़कर की, ले लो, दे दिया एक महत्वपूर्ण विकेट की सौगात, तोहफा अपनी टीम के लिए। डेजर्ट मो एवेंजर्स हालांकि पकड़ने गए थे कैच, मगर तकदीर में था रन आउट, नॉन स्ट्राइकर। आउट होने वाले थे सुमिरन, मगर हो गए सनत नेवगी। मैं तो कहूँगा बैड लक फॉर सनत। मुकद्दर का लिखा कौन बदल सकता है। बिल्कुल इस गेंद पर एक विकेट को मिलना था, हालांकि सबको लगा कि कैच होगी, मगर रन आउट। मेहांक धारवाड़कर फिर से एक बार इस विकेट के साथ पूरे जोश से भरपूर। ही इज बबलिंग विथ कॉन्फिडेंस, सच वंडरफुल क्रिकेटर दैट ही इज, यंग एंड इमेंसली टैलेंटेड। हालांकि हमारे बंटी उडेलकर भी आश्चर्यचकित रहेगा, केवल 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ये चौथी ओवर जो कि जारी है। गजा मसूरकर चीते की तरह मैदान पर दौड़ते हैं और उतनी तेजी से वापस भी लौटते हैं। थर्ड अंपायर की मदद करते हुए गजा। पूरे सांगेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर दौड़ लगाई जाए तो गजा मसूरकर सबसे तेज। सांगे के बिल्कुल हुसैन बोल्ट। ये देखिए जितनी तेजी से, और बक्से को भी बिल्कुल बैलेंस से पकड़ा है और मुस्कुराता चेहरा उनका हमेशा। ये देखिए ज्यादा तारीफ सह नहीं पाते। तो अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी, स्कोर 17, 2 विकेट के नुकसान पर 167 रन अभी भी दूर। 99 गेंदों में प्रशांत गढ़ेकर जो कि गेंदबाज की ओर काफी वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से अंपायरिंग करते हुए सुंदर ताले जेवना, जो कि हमारे बीच एक तकिया कलाम साकड़ी। बिल्कुल ब्लॉकर में हाफ वाली पर सुंदर, फिर से एक बार बढ़िया फील्डिंग। ये देखिए मिजाज मेहांक का ऐसा कि मर्द को दर्द नहीं होता। हालांकि इतनी तेजी से गेंद लगी है, मुझे तो लगता है कि मेहांक धारवाड़कर की बॉडी स्टील से बनी है। आप देखिए रिप्ले में ये लगा शॉट, और ये देखिए बिल्कुल हार्ड मास से बिल्कुल नहीं बने हैं, स्टील से बने हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील। इतनी मजबूत खिलाड़ी मेहांक। जब एक एडवर्टाइज में सचिन तेंदुलकर को पूछा गया कि आपकी शक्ति का राज क्या, उन्होंने कहा बूस्ट। मुझे पूछना होगा मेहांक से, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मेहांक? योर एनर्जी। फुल टॉस गेंद, मिस टाइमिंग के साथ गेंद हवा में, मगर सुरक्षित रहेंगे सुमिरन आमोनकर। एक बड़ा रोल प्ले करना है बिल्कुल मेहांक रावत, जो कि चौथे नंबर पर आए हैं। पहले 2 सलामी बल्लेबाज आउट, ईशान गढ़गर उनके साथ सनत नेवगी। वो 2 विकेट लेकर बिल्कुल एक दबाव बरकरार रखने की कोशिश अपनी सुंदर गेंदबाजी के साथ, और वही दिखाई देता हुआ मैदान पर मेहांक धारवाड़कर अब तक 5 गेंदों में 5 रन दे चुके हैं, 1 रन आउट कर चुके हैं। सनत नेवगी को बिल्कुल मैं तो कहूँगा बैड लक। गेंद कहाँ से आई, कैसे चली गई स्टंप पर, कुछ पता नहीं। पल में आउट होकर बिल्कुल लौटते नजर आए डगआउट की ओर। मगर तारीफ करनी होगी डॉक्टर वेंकटेश साहब की, उनके दोनों ही पुत्र होनहार क्रिकेटर्स।
और इसी बीच हल्के से बाहर को जाती है, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें को पसार, इशारा आता अंपायर की ओर से वाइड का। अक्सर अंपायर खुश होते हैं जब कभी मैं उन्हें कहता हूं कि शाहरुख खान की तरह हाथ फैला दिए हैं, मगर एक अंपायर काफ़ी नाराज़ होता है, वो है सचिन कुंडेकर। कहते हैं कि शाहरुख से ज़्यादा मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूं, मगर अमिताभ बच्चन कभी बाहें फैलाते कभी नहीं देखा। फ्री हिट का मौका, धीमी गति से गेंद बिल्कुल पढ़ लिया था, गगन को चूमकर आसमान के पार जमीन पर आ गिरी है गेंद। क्या बेहतरीन शॉट मयांक रावत का, मयांक की गेंद पर। इन दोनों के नाम के बीच ज्यादा फर्क नहीं, एक मयांक दूसरा मयांक, मगर दोनों के तेवर निराले। 4 ओवर की समाप्ति और बेहतरीन शॉट के साथ चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर 25, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 59 रनों की आवश्यकता बची हुई 96 गेंदों में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, इट्स एंड ऑफ 4 ओवर्स। मेरे साथ कॉम बॉक्स में हरीश काकोडकर जुड़ेंगे जल्द ही, उनके बाद बंटी उडेलकर, उनका भी स्वागत। तो सिम्बा फिल्म में काम कर चुके हैं बंटी उडेलकर, बिल्कुल क्या रोल निभाया उन्होंने। और मैंने जैसे उनकी तारीफ की कि गोवा के सरजमी पर कृष्ण मुखर्जी की भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो है बंटी उडेलकर। और अपने चेहरे की खुद मेकअप करते हैं, एक मल्टी टैलेंटेड। फक्र है मुझे उनकी दोस्ती का, बिल्कुल हमारी दोस्ती लगभग 14-15 वर्षों से मेरे साथ गोवा प्रोफेशनल लीग के दूसरे सीजन से जुड़े हैं, यानी कि 2010-11 से। और हरीश 2014-15 से मेरे साथ जीसीए में कॉम्बॉक्स में जुड़े हैं, तो काफ़ी पुरानी दोस्ती हम तीनों की। मगर बंटी आप कह सकते हैं लगभग 13-14 वर्षों से मेरे साथ जुड़े हैं, काफ़ी सारे बड़े टूर्नामेंट्स किए हमने। और हरीश भी बिल्कुल काफ़ी कामयाबी हासिल करते हुए अपनी कमेंट्री में 10 PL के लिए भी जा चुके हैं हरीश। और मेरा सफ़र लगभग नेपाल काठमांडू तक हो चुका है। तो सभी दर्शकों से दुआओं की दरखास्त, जल्द सुन पाएंगे आप सब हमें IPL में भी। ओ फिलहाल फिर से एक बार बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, वहां पर खिलाड़ी तैनात, मगर सुंदर फील्डिंग के साथ गेंद को रोका। हालांकि गैप ढूंढने की कोशिश यहां पर सुमिरा आमोनकर की ओर से, बढ़िया प्लेसमेंट भी था, मगर रफ्तार की कमी थी। मगर तारीफ करने होगी फील्डर की, जिस प्रकार से तेज तर्रार गेंद तक आए, गेंद को फील्ड किया। कीथ पिंटो की गेंदबाजी। हालांकि कीथ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि अकेले रहते हैं मारगांव में, स्वयं अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर का ख्याल रखते हैं। उनके पेरेंट्स दुबई में, मगर कोशिश उनकी यहाँ पर एक बड़ा खिलाड़ी बनी। इसी बीच अपील वहाँ पर LBW के अंपायर कोई दिलचस्पी ना दिखाते हुए, तो मैं बात कर रहा था कीथ पिंटो की। अकेले अपने आप को सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स दुबई में, मगर उसके बावजूद संघर्ष करते हैं, इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। तो तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज कीथ पिंटो के, केवल 25 वर्ष के युवा। और इसी बीच हल्के हाथों से, और अगर हेराम परब की बात की जाए तो बिल्कुल पिछले वर्ष के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में नंबर 1 पर आए थे हेराम, जो कि उनका स्वागत कॉम्बॉक्स में मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं, और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। जिसे मैंने कहा कि कमेंटेटर्स की भी हिम्मत अफजाई करते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि गुड जॉब सर, थैंक यू हेराम, वी रिक्वायर सच गुड वर्ड्स टू बिकम more brilliant and can serve you all in a more better way. कीथ पिंटो पटकी हुई गेंद बिल्कुल हल्की सी बाहर जाती हुई, हाथ खोलने का मौका। फिलहाल 2 रन की कोशिश रहेगी और आसानी से मिल भी जाएंगे शायद। बिल्कुल जोर लगाया, क्योंकि हिंदी में कहावत है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस 2 रन के साथ धीरे से अब स्थिति फिर से एक बार सुधरती हुई, यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के बाद एक साझेदारी को होना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा सरकार से 37 के लिए। कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल किया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा
31 रनों पर धीरे से बिल्कुल फिर से एक बार रनों की गति यहाँ पर दिखाई देती हुई जमने का प्रयास। इक्का दुक्का रन के साथ थोड़ा समय बिताना ज़रूरी होता है बल्लेबाजों का क्रीज पर। अब जब बिता लेते हैं तो बिल्कुल कंफर्ट के साथ खेलते हैं। अच्छी गेंदबाजी, मगर फिर से एक बार एक रन यहाँ पर अवश्य मिलेगा। तो एक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 31 रनों पर। 5 ओवरों की समाप्ति। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर। जुड़ेंगे मेरे साथ कॉम्बॉक्स में हरीश काकोड़कर, आपको देंगे अंग्रेजी में इस मैच के अपडेट्स। So end of fire, 31 for 2. So Mayank Rawat becomes the key here in this particular game. Both the wickets have fallen in forms of run out. Unlucky Sanat Nevgi. Good piece of fielding, but he makes it in the end. The run out of Ishan Gadekar, the captain, was a brilliant piece of fielding. Absolutely, make no mention about it. He took it absolutely no time and just threw at one go. And he had almost 1 stump to 8. He hits it, and Ishan Gadekar very well knew that he was gone. That was good fielding. But talking about the other wicket, that was the run out of Sanat Nevgi. Well, this total pure unluck. Unjust here for the batter at the non-strikers and ricocheting of the hands of the bowler and going back to hit the wickets. Just can't do anything as a batter when it happens, because he was in an absolutely purple touch at the moment. And the way he was going throughout, not only this, but in the past tournaments as well, looked very good. That was very important wicket for the Desert Sindhmore Avengers. Tanush Kotian has been introduced into the attack. So Mayank Rawat's presence and Tanush Kotian's 4-over, as well as Sumit Kumar's spell, is going to decide the fate of this game, is as per my reckoning. I feel that phase when these players are going to battle it out is just going to be someone who is going to come up against the opponent. Might just have the little edge. Nicely played, very nicely played. Off the back foot, just the slight room given. He backs the punch while hitting Mayank Rawat. And that's a strong punch. Punches away in the extra cover region for a boundary. Nothing wrong with the ball. Just a slight bit of width and slightly short. Nicely clipped on the leg side for a single. That marks the end of over number 6, 40 for 2.
Nicely played. Keith Pinto into his second over. Pretty decent in the first. I somehow get the feeling that this match is going to go right down the wire. They need to get this score in under 19 overs. Sarkar 37. The ball kept low. Keith Pinto strikes. Sumira Namonkar, well, wanted to punch it in the extra covers region. The ball keeping low, hitting the stumps. Yeah, giving him a little bit of room to play that. And no position whatsoever. So third wicket going down at 41. And in a spot of bother at the moment, Sarkar 37. Gets himself off the mark. Tunis Saukar immediately. The power hitter, the big man, has been sent here at number 5. They're getting their wickets on a regular basis at the moment. Deserts and more Avengers. They've got a pretty good bowling lineup with Tanush Kotian. And a free hit has been opted here. The field at the bowling side is going well at the moment, and the need arises for Mayank Rawat to just free his arms and break the shackles. that is below sea level. Not only the arm is below sea level, but the bowler himself is below sea level. So much of difference in variation and the trajectory as well. Just getting a single, Mayank Rawat. It's T20. The T20 introduction has made the bowlers and the batters think so differently. You just can't be predictable. You got to do something or the other different, especially when there are 5 free hits in GOICHI League. Big appeal, trying to play down towards the final league region. And Keith Pinto, oh, look at the reaction. He feels that that would have hit the stumps. Umpire thinking otherwise. And let's see the replay. Yeah, it's definitely outside the line of the off stump, and that's where the umpire pitched outside line. He came shuffled across a little bit. So impact seems to be outside the line. All the 3 stumps are visible. So good call from the umpire. Good glove work. Maybe just a fraction late. Maybe just a fraction late. Tanush Kotian, the man who was called to replace Ravichandran Ashwin on the Australian tour, when Ashwin calls himself off the ground in the Test cricket. To give a call, to get a call this time, let's see. They feel they've got the man. They feel they've got him. Mayank Rawat thinks that he has got his back leg.
Well, a lot of drama here, a lot of excitement, animated stuff here. Oh, this is close. This is touch and go. Absolutely touch and go. And that is a perfect decision that has been made. Well, you got to give credit to the keeper over there. He was quick there, reflexes. He saw the ball and he saw the batter. Batter never knew. He thought that the ball had gone down towards the third man region. So he was heading for the run. Soham Panwalkar has given them the big fish, Mayank Rawat, and now Sarkar 37 in big trouble, 43 for 4. And in walks Ahmed Amshikar. So Tanush Kotian really bowling well here. So he gets the wicket here. So getting there his wicket over here, Tanush Kotian, in the form of stumping. Lovely and quick glow work. And that is what it is all about, is GOICHI League, giving the big platform ahead of the next season. One thing certainly that we saw here, not only here, but a lot of viewers joining to watch players like Tanush Kotian, Mayank Rawat, and also wonderful coverage given by the all print media. This is what they know, that this is after maybe Goa Premier League, one of the biggest in Goa as far as T20 is concerned. And that's the reason why you have to put in everything. You have to just showcase all your talent, all your energy out here in the middle. Yeah, very well played here. Very well played by Tunish Shaukar. Played down towards the third man region and gets a boundary, showing the depth sign of his touches, not only the power hitting. Going for the switch hit and gets a boundary. So that's the skills that you require nowadays if you want to shine in a T20 format. 48 for 4 in 8 overs. Trying to sweep the ball here. This time a big appeal, but straying down the leg side. Going down is what the umpire says. Big batters all back to the pavilion. Played very well. There's a man there at the point region. Ahmed Amshekar is taking his time at the moment. They've lost 4 big wickets. That is putting additional burden on the batters in the middle. A lot of runs here now to get.
Swept towards the mid-wicket region, going to get a single. But too many dot balls here consumed by the batters will be difficult later on. Bowlers are bowling well. They are picking wickets. So last of the free hit opted here by Tony SARKAR. So he's going to just try and get a big one here somehow. Once again, the sidearm bowling. He bends while delivering the ball, and it doesn't allow the ball to give the flight. So he's bowling just flat, and another single taken here. Must have practiced a lot in the nets, bowling that sidearm. Keith Pinto, 9 overs gone, 50 for the loss of 4. And I was talking about next season of Goa Ranji. What a big season it will be. Yashasvi Jaiswal has already confirmed that he's going to play for Goa Ranji team. They have won the plate division, the plate tournament, and not lost a single game in the entire plate division, and made into the elite group this season. And Yashasvi Jaiswal, and maybe we might get one more big news coming our way soon. There are many things in the pipeline as per BCCI Joint Secretary Rohan Gauss Desai. Oh, that's a lovely shot. Cracked down. This is really smoked half of the blade. No chance for anyone. No one moved, in fact. Straight onto the side screen. That's the power of Tony SARKAR. Avishkar Mone has been introduced. And what a welcome. Was talking about the Goa Ranji cricket. What a moment it will be when some of the Goan players are going to play alongside Yashasvi Jaiswal and some of the big players. We might just hear another name in some short time. So certainly it's going to be a big name that is going to make and play as an outstation player. Outstation player for Goa Ranji team. Let's see who is the name. It will be heard in some time. Maybe in the coming days. Square drive towards the backward point from Amit Amshekar. Maybe it will be played, maybe it will be heard in some next days. So let's see who is going to be. Whether it's going to be a batter, whether it's going to be a bowler or an all-rounder. So he is trying to play his game. He knows that they are slightly back in this match. Not only the 4 wickets, but plenty of runs. But he can change. And the golden over is going to be very crucial. Bowling quicker now. Just back of length. Avishkar Mone just plays regularly in the many of the leather ball tournaments. Avishkar, and has been successful. Problem with the injuries to him many a times. Maybe the problem with the fitness levels. He's just got to keep his fitness level to be at this competitive level at GOICHI League. He's a street smart cricketer, whether it's bowling or whether it's batting. Beaten there, beaten the keeper. Lovely feeling. That could have just sneaked in and went for 4 runs. Just gets a single. So putting in the efforts here, fielders of Deserts and More Avengers. 10 overs gone, 58 for 4. So at this moment, the partnership is required, but that too at a quick time. Lots of runs required at a required run rate of 12.60 in the next 10 overs. 1, 2, 6. 126 in 60 balls. Golden over is still there, and the batting power play. That might just give a ray of hope here for SARKAR. 37. Ten overs done, 58 for 4, 126 runs required in 60 is the equation.
And now I'll invite Bunty Udelkar for his voice in the commentary. It's an interesting match, but more towards more Avengers at this point of time, considering the batters that had gone back into the dugout. Those are hard-hitting batters, whether it's Tishan Gadekar, whether it's Sanat Nevgi or Mayank Rawat. Three top batters who can up the ante, who can go at a strike rate of more than 200 at their will, have headed back to the dugout of Sarkar 37. So that is a big cause of concern for them. So golden over has been taken. And forming is the golden boy of Sawadem, Bunty Udelkar. Golden man, I can call him, because he has acted in many of the Bollywood movies and does a wonderful job in the commentary as well. धन्यवाद हरीश काकोड़कर जी, जो तारीफ अब कर रहे हैं। इसके अलावा नदीम अहमद, जो कि कमेंटेटर बॉक्स में मेरे साथ यहाँ पे स्कोर, जो कि विराज तेंदुलकर। स्कोर फिलहाल 10 ओवर के बाद 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो पारी जो है वो लड़खड़ा रही है। इसी बीच तो जो स्कोर कार्ड है, जो आउट होने वाले बल्लेबाज सनत नेवगी 14 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए। महंक धारवाड़कर ने उनको रन आउट किया। ईशान गढ़ीकर 5 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए। अरसलन खान ने रन आउट कर दिया। इसके बाद ये गेंद, ये बिल्कुल बढ़िया शॉट खेल दिया है, अपने आप को पोजीशन किया और ये लाजवाब चौका हासिल किया है। इस चौके के ज़रिए थोड़ी सी खुशियाँ दौड़ती हुई सरकार 37 के खेमे में। हालांकि 11वीं ओवर जारी है, 62 for 4। तो सुमिरन आमोनकर 11 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाए और कित पिंटो की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो। ये उठाने की कोशिश, देखना होगा वहां पे, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आउट। 5वीं विकेट का पतन हो चुका है। इसके बाद मैं स्कोर कार्ड बता रहा था, मयंक रावत 12 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाए और वो भी रन आउट। सोहम ने उनको रन आउट किया। तो जो लड़खड़ाती पारी है सरकार 37 की, अब एक अच्छी साझेदारी, रन गति बिल्कुल बढ़िया होने के साथ विकेट भी बरकरार रखने होंगे। अगर अच्छी साझेदारी बनती है तो ही आप ये मैच को, जहाँ तक पूरी तरह से दबाव बनाया है डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने, उस पे उभर सकते हैं। आपको साझेदारी रन गति के साथ बरकरार रखनी होगी। तो देखते हैं नए बल्लेबाज अर्जुन राप्रिया अभी भी क्रीज की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट विकेट जो कि अमय धामसीकर 13 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए। हेरम ने उनका शिकार किया, दीपराज गांवकर ने लपक ली। यहाँ पे अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकने की कोशिश की हेरम ने, हालांकि गेंद तक पहुंच नहीं पाए। 1 रन, इस रन के जरिए स्कोर 63 for 5। तुनिश सावकार और अर्जुन राप्रिया, ये दोनों बल्लेबाज इसी बीच गेंद
गेंदबाजी का विश्लेषण हेरम परब तीसरी ओवर में चल रहे हैं। 16 रन दिए, हालांकि 17 रन दिए, एक शिकार कर चुके हैं। सुमित कुमार 1 ओवर 2 रन, कोई सफलता नहीं। मयंक धारवाड़कर 1 ओवर 12 रन, कोई सफलता नहीं। कित पिंटो 3 ओवर 11 रन, 1 विकेट। तनुष जो कि 2 ओवर तनुष जो कि 2 ओवर 14 रन, 1 सफलता। आविष्कार मोने 1 ओवर 8 रन दिए, कोई सफलता नहीं। विकेट्स जो गिरे हैं, पहली विकेट 7 रन पर गिरी, दूसरी 17 रन पर, तीसरी 41 रन पर, चौथी 43 रन पर, 43 रन पर, और पांचवी जो अभी भी गिरे हैं 62 रन पर। टोटल स्कोर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के समाप्ति के बाद। हालांकि 70 रन जो कि गोल्डन ओवर चल रहा था, तो इस ओवर के जो रन आए वो डबल हो चुके हैं। 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के समाप्ति के बाद। आप देख रहे हैं डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स और सरकार 37 के बीच ये मैच। हालांकि पूरी तरह से दबाव बनाया है डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने, बड़ा लक्ष्य दिया था। ये अड़े बैट से खेल दिया है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार गेंद चली गई है, तेज रफ्तार के साथ चौका मिल चुका है। इस चौके के जरिए स्कोर 74 पर जा पहुंचे हैं, 74 फॉर 5। आस्किंग रन रेट 12 के ऊपर जा पहुंचे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपको विकेट बचाकर खेलना होगा, रन गति भी बरकरार रखनी होगी। कदमों का इस्तेमाल किया, आ गया है, सीधा खेल दिया, लेकिन वहां पे फील्डर पहले से ही चौकन्ने थे, तैयार थे, वो बिल्कुल गेंद तक पहुंचे और अपने टीम के लिए यकीनन रन बचा लिए हैं। 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर सरकार 37। इसी बीच ये गेंद और एक रन का इजाफा होता हुआ स्कोर 76। तो देखना होगा, साझेदारी फिलहाल तो 6 गेंदों में 14 रनों के हो चुके हैं, इसी गति से चलना होगा। रन औसत जो है उस पर ध्यान रखना होगा। इसी बीच बेहतरीन कलाई का उपयोग, गेंद लॉन्ग लेग के बाहर 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पार कर चुके हैं। तो इस चौके के जरिए थोड़ी सी उम्मीदें जगती हुई सरकार 37 के लिए स्कोर 80 पर जा पहुंचा है, 80। अब 50 गेंदें बचे हैं, 104 रन चाहिए। ये मुमकिन है, क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आपको धैर्य रखना होगा। ये आड़े बैट से खेल दिया, वहां पे फील्डर तैनात थे, उन तक गेंद एक बाउंस के बाद पहुंच गई, तब तक 1 रन बनाने का मौका था। अर्जुन राफरिया और तुनिश सावकार ये
छठी विकेट के लिए साझेदारी धीरे धीरे पनप रही है। यहाँ पे और एक रन खाते में जोड़ते हुए 12 ओवर हो चुके हैं, स्कोर 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मैं आपको ब्यौरा दे दूं, जो करंट रन रेट है 6.83 और आस्किंग रन रेट वो 12.75 पर जा पहुँचे, यानी ऑलमोस्ट 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से आगे रन बनाने होंगे। 48 गेंदें बची हैं, 102 रनों की दरकार है। "48 balls, 102 to win" पुण्य पालकर और प्रशांत गड़ेकर, ये दो ऑफिशियल्स अंपायर्स मैदान पर हैं। रोहित अस्नोरकर जो कि मैच रेफरी हैं, और मेरे साथ स्कोरर विराज तेंदुलकर, उसके अलावा हरीश काकोड़कर और नदीम अहमद जो कि कमेंटेटर भी है और बेहतरीन गायकी भी करते हैं। तो फिलहाल 13वीं ओवर की पहली गेंद का इंतजार। ये टूर्नामेंट सांगेम क्रिकेटर्स ने आयोजित किया है, गोइची लीग सीजन 24। ये उठा दिया, देखना को वहां पे गेंद हवा से बातें करती हुई बिल्कुल हवाई यात्रा पे निकली है। 6 रनों का इशारा अंपायर द्वारा, और अब थोड़ी सी इस 6 रन के साथ जान में जान डाल दी है सरकार 37 के खेमे में। इसी बीच कीथ पिंटो अपनी निजी चौथी ओवर में चल रहे हैं। एक और ये आउट, छठी विकेट का पतन हो चुका है। अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है और ये करारा झटका। यहाँ पे साझेदारी पनप रही थी, लेकिन आखिरकार इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं कीथ पिंटो, जो कि उनका ये दूसरा शिकार। इसी बीच स्कोर जो है 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 88 फॉर 6। तो फिर एक बार जो आशाएं बनी थी वो अब फिर एक बार धुंधली नजर आती हुई सरकार 37 को। हालांकि उनको इस मैच को जीतना ही है, बल्कि 19 ओवर में जीतना है, लेकिन फिलहाल तो पिछड़ रहे हैं। पूरी तरह से दबाव बनाया है डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने। बेहतरीन बल्लेबाजी पहले कर चुके थे, अब लाजवाब गेंदबाजी के बदौलत इस मैच को अपने पाले में खींच लिया है। ये उठा दिया है मिड विकेट, बाउंड्री लाइन की ओर गेंद जा रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? नहीं, फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह गए। गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। तो बिल्कुल हौसला नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश जारी है। अब कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखना होगा ये कोशिश उनके रंग लाती है नहीं। अगर जीते तो कोशिश रंग लाएगी।
बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। स्वीप शॉट खेलने की कोशिश, कॉट बिहाइंड की अपील वहां पे, लेकिन अंपायर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, नकारा इस अपील को। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 92 फॉर 6। तो अब जो फासला बचा है जीत का, बयालीस गेंदे, 42 बॉल्स एंड 92 रन्स। 4 विकेट हाथ में है। तो देखते हैं, लक्ष्य जो है 184 रन है। सरकार 37 बिल्कुल पिछड़ रहे हैं और अपना दबदबा बनाया है डेजर्ट एंड मोर एवेंजर्स ने। एक छोर से तुनिश सावकार डटे हुए हैं, 14 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अब सारी आशाएं उन सरकार 37 की तुनिश पर टिकी हुई। उनको शिवा सिंह साथ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे 1 रन तो मिल पाएगा। बीच में जब मौका मिलता है चौका लगाते हैं, जब हवाई फायर करना होता है तब हवाई फायर कर लेते हैं, और इक्का दुक्का मिलता है तो वो भी लेते हैं। लेकिन गति तो आपको 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रखनी पड़ेगी। इसके साथ विकेट बचाकर भी रखने होंगे। ये कड़ा प्रहार किया, उठा दिया है, और ये बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल काव कॉर्नर के ऊपर से हवाई यात्रा पे गेंद निकली है, और अभी तक आशाएं नहीं छोड़ी हैं, डर नहीं रहे हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो बिल्कुल बढ़िया खेलते हुए शिवा सिंह, जो कि अभी अभी गए हैं। इस 1 रन के जरिए 100 रन पर जा पहुंचे हैं सरकार 37। 100 रन हो चुके हैं। अभी तक बहुत लंबा फासला तय करना होगा, 84 कदम और चलने होंगे। ओ, बहुत ही बढ़िया प्रयास, लेकिन अपने टीम के लिए यकीनन रन बचा लिए हैं। उस प्रयास की सराहना की बाकी के साथी खिलाड़ी ने, हौसला अफजाई की। रक्षात्मक तरीके से सम्मान देते हुए इस गेंद को अपने फॉलो थ्रू में तनुष ने इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच गेंद, और ये चौका, 4 रन्स। तो यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तुनिश सावकार 18 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन पर खेल रहे। शिवा सिंह 5 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बना लिए हैं। अब हर हालत में आक्रमण करना होगा, हमलावर रहना होगा, क्योंकि आपके पास जैसे जैसे गेंदें कम हो जाएंगी उतना मौका कम होता हुआ नजर आएगा। तो आपको बड़े लंबे शॉट खेलने होंगे, रन औसत जो है उस पर ध्यान देना होगा। 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। $103
for 6. ये गेंद कड़ा प्रहार किया, देखना होगा वहां पे क्या ये अंपायर का इशारा आता है, क्या ये 6 या और ये चौके का इशारा कर चुके हैं। इस चौके के जरिए स्कोर 107 107 रन। ऐसे ही रन गति से बनाने होंगे, वो भी आपको 19 ओवर में बनाने हैं। तो गति जो मैंने औसत बताया है आस्किंग रन रेट, उसके ऊपर जाकर रन बनाने होंगे। डीजी नारो इसी बीच गेंद वापस आ चुकी है। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ था और रुकावट के लिए हमें खेद है। इसी बीच शिवा सिंह और तुनिश सावकार गेंद जो बाहर जा चुकी थी उसको चेक करते हुए पुण्या पालकर और प्रशांत गड़ेकर, तो गेंद सही पाई गई है। फिर एक बार सुमित कुमार के हाथ में गेंद भेज दी गई है। ये यहाँ पे पॉइंट की दिशा में खेल दिया है। ओ वहां पे मिस फील्डिंग के जरिए चौका, 4 रन्स। इस चौके के जरिए स्कोर 1-1-1 यानी नेल्सन फॉर 6। 111 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सुमित कुमार 2 गेंदों में 2 चौके खा चुके हैं। इस बार 1 ही रन मिलेगा। तो सुमित कुमार पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं कि किसी भी हालत में विकेट हासिल किया जाए। फिलहाल अपनी निजी तीसरी ओवर में चल रहे हैं और अब तक सिर्फ कोई सफलता नहीं, 23 रन दे चुके हैं। 1-1-2 for 6। ये गेंद कड़ा प्रहार किया, फुल टॉस गेंद थी, उठा दिया है। गेंद हवाई यात्रा पे निकली है, सीमा रेखा पार, 6 रन। तो अब फिर एक बार आशाएं बनती हुई नजर आ रही हैं सरकार 37 के लिए। तुनिश सावकार जो कि हौसला नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल 6 रन हासिल किए, करारा तगड़ा शॉट खेल दिया और गेंद फिर एक बार मैदान के यानी कंपाउंड के पार जा चुके हैं। फिर खलल पड़ी है, खेल रुका हुआ है। 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 15th ओवर इन प्रोग्रेस। हाँ वही ना, मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार आशाएं बनती नजर आ रही। तुनिश सावकार, मैंने कहा था कि जब तक वो वहाँ पे डटे हैं, पूरी तरह से आशाएं सरकार 37 की तुनिश सावकार पर टिकी हुई हैं। 19 गेंदों का सामना किया और तेजी के साथ 34 रन बनाए। जब तक गेंद आती है
तो कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करते हैं हमारे ऑल द वे फ्रॉम वास्को से हिंदी और अंग्रेजी समालोचक जीसीए के, हालांकि गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त कमेंटेटर जब जीपीएल हुआ था तो शुरुआत उन्होंने की थी कमेंट्री की, और बिल्कुल बढ़िया गायकी भी करते हैं। और मेरे साथी, मेरे दोस्त जो कि डैशिंग कमेंटेटर मिस्टर नादिम अहमद। Thank you, Wendy. Well, no doubt he is another good bowler. Sumit Kumar is going to be absolutely a real fight. And look at the batting of the dashing Tunis Sarkar. Oh, just trying to play away, but the ball slightly away outside the off stump, and a dot ball to mark the end of 15 overs. 119 for 6, chasing a target of 184 to win. Still a long way to go. Needs 65 of remaining 5 overs, that is 30 deliveries. It's good to see, absolutely. Tunis Sarkar is taking the charge alongside Shiva Singh. 64 runs of 29 deliveries. It's not difficult to get. With the way Tunis Sarkar especially is batting, he's got that muscle. He's got that size of the man. In the meantime, another one single here from Shiva Singh, looking for 2 here. Oh, they might not get, because going for 2 would have been risky for sure. SANGUEM Cricketers presents GOICHI League, powered by Honorable Minister for Social Welfare, Shri Subhash Desai. What a league this is. Oh, lower full toss, lovely shot. The ball has just gone past the umpire. Look at the reflexes of the umpire, Prashant Gadekar. Quickly moves aside, more quicker than any fielder on the field. It's the beauty of Prashant from Aldona. Nicely done, just picking up singles and lying in waiting for the right opportunity. Setting a good example of controlled aggression, and you never know, Sarkar 37 also might get to the target. Just few good shots, what is needed to get them on the track. Lovely drive, wonderful bowling from Tanush Kotajan. It's just keeping the line straight, it's just giving every ball a single, not more than that. 5 deliveries been bowled so far, 5 singles that he has given.
This is his fourth over. He's given 30 runs. Right in the block hole once again. Beautiful over. Just 5 of it. What a wonderful over comes to an end. End of 16. 124 for 6. And Tanush has given 30 runs. Picked up a wicket of his 4 overs of the bowling quota. Equation is 60 runs of 24 deliveries. Well, they cannot play in this manner. Now for every bowler single will not serve the purpose of team SARKAR 37. What they really need to do is go after every bowler, any delivery now. They should not wait for the right opportunities, because there will be very few right opportunities and more of good deliveries what the bowler will try to bowl to restrict the batters. 124 for 6 after 16. Shiva Singh 21 of 12. Tunish 38 of 23 deliveries. No doubt they have formed the partnership, but can they survive along and sustain the pressure? Here Amparab. Lovely shot by Tunish. The ball will go all the way, and yes, it is bang on the stand. 6 runs. This is exactly what is required, and Tunish SARKAR is absolutely rising up to the occasion. Beautifully picked up. Every action has equal and opposite reaction. Newton's third law of motion. Hiram started, but Tunish wasn't ready. Now he is. Good bowling. Just a punch to pick up a single. Well, it's absolutely a very challenging task for the batters. They cannot afford to get dot ball and singles. They have to shift gears. They have to go after. But calculative, at the same time, they cannot lose the wicket as well. Tunish reaches his 45, just 5 runs away from half century. Oh, well bowled. Well bowled by Hiram. Just wanted to play, but missed the line completely. Shiva Singh. This dot boy also will only add to the pressure of the batters. In the morning, we saw how Priority Titans chased 192 easily against Chowle Global. Oh, once again, but this time a little bit of bat on that, but finds the field in the deep point region. Will be another additional single here. Of 2 deliveries, Shiva Singh has picked up just 1. Ramparam has given so far 25 runs and picked up a wicket in his 3.4 overs. More last 2 deliveries remaining of his bowling quota. Oh yes, once again a lofted shot, but this time finds the fielder and he takes it. That's a wicket for Hiram Parab. Second wicket for Hiram of Tunish SARKAR. The prize wicket is here. Wanted to go for it, but lack on the distance. And down the throat of the fielder in the mid-wicket region, and he has digested the delivery with Hajamola. Wonderful catch. Safest pair of hands. He was well aware. Look at how close that he was from the boundary rope. A smile on his face. He is delighted. He is happy to have a wicket and not stepping on the rope. Ishan is out, the captain, and then a lot of wickets are falling, almost 7 wickets down on a score of 132. They try to give a good start, Ishan Gadekar and Sanat Nevge. But he's won a good start. Look at not a good start from the openers, what they can reflect it on the scorecard. So 132 for 7 now. Still the current rate is 7.84, while the required run rate is 16.42.
So they need 16 runs and over and not 7 to 8 runs. But the credit goes to the bowlers for their fantastic bowling in the good areas. And the head umpire is getting much better than Sumit Kumar. Last delivery, he has given so far 25 runs and picked up 2 wickets. While Sumit Kumar had given 30 runs and picked up 1 of his 4 overs of bowling quota. Good swing of the bat, but only 1 single here. As the ball hit straight to that fielder who took a brilliant catch off the SARKAR. 26 given of 4 overs, picked up 2. That is the bowling figure of head umpire. End of 17, 132 for 7. Now the requirement is 52 runs of 18 deliveries. Things are getting just tough here for the batters of SARKAR 37. And a big thank you, as I just mentioned, big thank you to the sponsors, Desert Mo, Priority Constructions, Nilesh Cabral, MLA Kuruchorim Constituency, Rajesh Fal Desai, MLA Kumbarzua, HDFC Bank, Deepak, Amarnath Desai, Yogesh Dalal, Santosh Fal Desai, Prasad Naik, Pochu, Abhijit Desai, Goa Sponge and Power Limited, JWS Cement, and the names will be continued. TJ Farms, Mehang Dharwadkar, oh, finds the gap, the ball is racing away, a very quick outfield, the ball will go, the very first ball of Mehang was shot to the fence, looks like he's correction, Sumit Kumar. Correction, Sumit Kumar the bowler and not Mehank. So 18 to in progress and score is 136 for 7. .48 runs off 16 balls and the 8th wicket goes down. One more wicket fall and that is absolutely very dismay for SARKAR 37. It's difficult for them to just recover. Now just last 2 wickets and Desert Mo Avengers are heading towards the victory, and you still never know. I still hold my fingers crossed, but little resources though. 136 for 8 now in the 18th over. After this, only 2 overs will be remaining and 48 runs still needed. With little resources and huge runs is what the batters need to get. Wonderful delivery. And this is his 4th over. SKS, I beg your pardon that I mentioned that 4 overs he's given 30 runs now. In 3.3 he has given 34 and picked up 1 wicket. Sumit Kumar from the far end into the 18th over. Desert Mo Avengers posted 184 as a target. Swing and a miss, but there should be appeal and given. Another wicket. Dheeraj Yadav caught right in front of the stumps. There's just 1 wicket to get to the victory. Desert Mo Avengers. Dipraj Gaonkar will be quite pleased with the performance, especially by the bowlers. And of course the batters who put up a good total on the board to defend comfortable. Though the toss was in the favor of SARKAR 37, in spite of taking the bowling first, they could not restrict the batters excelling, playing, going beyond 180. And now, after posting such a good total on the scoreboard, it was a good bowling. Picked up early wickets of the captain Ishan Gadekar and Sanath Nevgi, and then started the pressure going on the shoulders of the batters.
As every fall of the wickets, the pressure, but still, there was one man standing tall, putting the best foot forward and playing such a marvelous inning is SARKAR, alongside Shiva Singh. And the bowlers have managed to break that partnership as well. Now there is absolutely very little hopes here for SARKAR 37 to win this match, but very bright chances for Desert Mo Avengers to win this match. More two deliveries of Sumit Kumar. Oh, lovely delivery, a dot ball. Score remains unshaken on 136 runs. Dheeraj. Yadav departed in the last man. Siddesh Naik is just having an evening walk. A slow one once again, and what a brilliant over comes to an end. A completion of 18 overs. 136 for 9. Well, I will just continue the names of the sponsors. It's Goa Sponge and Power Limited, JSW Cement, DJ Farms, Shraddha Spet Private Limited. Man of the series sponsored by Raghunath Muraskar. 12 deliveries and 48 runs. The equation is 48 runs of last 2 overs. Best bowler sponsored by Lakshman and Pramod Naik. Man of the final sponsored by Ramnath Naik, proprietor Dego Enterprises. Man of the finals sponsored by Gurunath Naik, Mehank Dharwadkar. Oh, low full toss in the leg side. The ball is up and just falling short of the field. Digesh very quick on the ball. Oh yes, the ball kept low, maybe slightly bit of a width was involved, but not really to signal that wide. So far, Mehank Dharwadkar has bowled 1.2 and he's given 12 of 8 deliveries. No luck to pick a wicket. Wide call this time, and yes, this time युवराज सिंह is just trying to convince पुनिया पालकर, सर वाइड दे दो, इस बार दे दिया, ले लो, खुश रहो. General Secretary of Sangam Cricketers, Amrish Marathe, very proud man. Another successful GOICHI League Season 2. It is the hard work which is definitely paying off in taking care of each and every banner, because they have taken the sponsorship and they're making sure what good banners. Even while coming, I saw on the big hoardings on the road. It's good work from the organizing committee
President Tushar Karmalkar, Secretary Amrish Marathe, and a very rich man of Sangye, the treasurer of Sangem cricket is Narayan Masurkar. And look at the beautiful ground. It's been surrounded by lovely banners. And when the season comes of cricket, the bank balance of Bunty Udelkar is just increases by 4 times. And he's happy because in the evening he's got a final to be done at MCC. Yes, white called Malbagaon Cricket Club in the morning here, in the evening there. So day and night earning for Bunty Udelkar. That's the reason he's always happy man, smiling, cracking jokes, bringing this lighter movement, making everyone smile. Great character. Well, coming back to the game, Mehank. Swing and a miss this time. The ball will race away to the fence. Yes, maybe the bottom edge of the bat. The ball very quickly. He's got that raw pace, Mehank Dharwadkar. And he was a man of the match on many occasions at Panjim Gymkhana Members League, one among the most prestigious tournament. To talk the great tournaments, we have Educates Cricket League T20, prestigious. GOICHI League T20, prestigious. PGML, MCL. A slow one, right in the block hole. Amazing delivery. A slower yorker, which rarely the bowlers can bowl. You require a lot of practice of that. And Mehank Dharwadkar, as we know, he's been definitely working really hard and sweating in the nets. I can see all the potential in him. Oh, lofted shot. The ball is up in the air. Enough bat on that. The ball is coming down the throat and he puts it down. That would have been the first wicket of Mehank Dharwadkar. Not at all a difficult catch. Very disappointing for Mehank. The last delivery opportunity has arisen, and the opportunity going back. You look at the body language. He's just shattered. Mehank should have at least picked up a wicket. Well, 19 was done and dusted. 143 for 9. Mehank Dharwadkar could have got a wicket. Yes. Never mind, it happens because बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. I just forgot to introduce Viraj Tendulkar. Not only he's got one of the most beautiful handwritings, he's a very good manual scorer, but also he's got that command over digital scoring. Good scorer, Viraj Tendulkar. And time to time that he has to signal to the official umpires with pressing that button, flashing the light. Not an easy job to do. Every ball that he needs to concentrate and properly make a note of that and upgrade. One little mistake can be very difficult situation, because each and every run counts and matters. All big teams, big tournament, so no chance for error. Last to the captain himself, good looking shot. This time the ball will find the gap and find the boundary. Absolutely cruising towards the win. Desert Mo Avengers. Well, this boundary will take the score to 149. Oh, another lovely shot this time. Gets the elevation. The trajectory is absolutely wonderful from Rutvik Naik. He's a genuine bowler and now is also doing good with the bat.
Well bowled and the smile on the face of Deep Raj. I wish and pray I want to soon see this guy, Deep Raj, in IPL. He's got all that talent. Coming down the track, and that's a catch. Congratulations. Desertamo Avengers all out on total of 155. Yes, he played straight back to the ball. Look at that beautiful catch. So please do join me for the post-match presentation as Desertamo Avengers have won by 29 runs against SARKAR 37. And yes, time to celebrate and also to shake hands. Let us see who's the guest with us and who is the player of the match.
Check test. Requesting both the captains to please kindly come for a quick chat, and then we'll have that presentation given. We have with us very special guest, Ashish Karmalkar, contractor of Sangue, and he is going to give away the player of the match. All right. Now, straight away, Deepraj himself is telling me that both the captains left. Never mind. Deepraj being the captain of Desert Mo Avengers. Well, what a fantastic inning by Ayush Velika, 56 runs, 45, 1 sixer, and 7 boundaries. Ayush, please come up and have your reward in the hands of the guest, Ashish Karmalkar. Contractor from Sange has given his precious time. Ayush Velika is receiving the man of the match. Ayush, nothing gets better. You showing so much of positives in your batting and turning out to be a player of the match. Pitch was really good to bat on. I just backed my shots, and whatever the situation was, I just went through that. What was going on, Ayush, when you're batting first? You had to put at least 170, 180. Is that the words that captain had told you, that nothing less than that? There was no pressure given from the captain. He just told to play whatever you feel like. Play your natural game. That was the instinct. And that is exactly what we saw, your natural game. All the best for the next matches to come. Congratulations for now. Thank you. Ayush Belekar with 56 runs of just 45 deliveries, 1 sixer, and 7 boundaries for him to be awarded as the player of the match. That's it from the presentation. See you back tomorrow for another matches to come. Till then, take care. Thank you.